All right, we can start now. So, welcome to the revision class of International Finance. Let me share my screen. My screen is visible. Guys, yes, no. Yes, ma'am. All right, so we'll be walking through the entire syllabus today. Wherever you have doubts, you can stop me and we can have a elaborative discussion on it. Otherwise, there are 4 units in the syllabus, I believe. First one caters to the evolution of international monetary system. Second one caters to both the foreign exchange market and international parity relationships. So this is unit one, this is unit two, this is unit three, which talks about the various kind of exposures that emanate from foreign exchange volatility and how we can manage the exposure. And the fourth one is around the financial management of multinational companies, correct? Yes, So ma'am. to start with, we have evolution of international monetary system as our unit one, where which covers. We got to brush up on some trade theories, right? We got to uh, understand how the monetary system has evolved from gold standard to Bretton Woods to now being a freely floating era of exchange rate. So how exchange rate have been discovered in the past and how they are being discovered now, and what are the pros and cons of various kinds of exchange rate regimes that have existed globally, right? So alternate exchange rate regime. So this particular unit, unit one, is completely theory, and there's not numerical or practical orientation बहुत नहीं है in the unit. So starting with, let's brush up on each one of it briefly, and wherever you want for me to delve deeper, you can tell me, and it will be completely a discussion based class because I have taught you everything. Okay, we have completed almost everything, and in the classes itself, so you better be interactive. No point me telling you all the time, every time. What's the point of teaching you these concepts if you're not discussing it now? So I am expecting your participation, right? So starting with the first unit, what do you understand by the term international trade? Also, guys, just before we start, I just want to address that I may not, I don't think I will be taking any break. Ideally, it is a 4 hour revision class with 1 hour break, but I believe that I will be continuing throughout for the upcoming 4 hours and probably less. Wherever you guys want to take a 10-minute break, you can tell me, okay? So coming international trade, right? So what is international trade, guys? What do you understand from international trade? Come on, you guys have studied international finance for last few months. Now, that's the basic definition I expect you guys to tell me. Anji Sanvik, बताओ. Exchange of exchange of goods and services between countries. Right. So across borders, exchange of goods, services, even the movement of capital flow across boundaries. Uh, uh, we invest in other countries in the securities of other countries, and other citizens of other countries invest in the securities of our countries. Even there's that. So goods and services, yes, because we are calling it a trade. Otherwise, the cross-border movement is not just of goods and services. It's also of ideas. It's also of technology, technical know-how, and the capital, right? So what are trading blocks?
An Trading. example of trading Hmm. bloc could be the trading groups that various countries make with each other. For example, Right, there right. could also be trading agreements like NAFTA, SAFTA. Uh, Correct. so these Right. nations, like the NAFTA, is a North American free trade agreement. So Hmm. these are countries in North America that have collaborated with each other to Hmm. facilitate trade with each other and draft policies so that easy trade and exchange could be availed by other countries. All right. All right. Which all countries are part of NAFTA? So we have USA, we have Mexico, and we have Canada, I suppose. Is that correct? Yes, ma'am. Right. So, very rightly mentioned here, these are trading groups or countries that come together to facilitate trade among each other, a regional economic integration, a process of regional economic integration where countries come together, formulate tariff and non-tariff policies so that they can make the flow of goods and services across borders easy, flexible, tariff-free, and unrestricted. They can facilitate an unrestricted movement of goods and services across countries. So to encourage trade, Ma'am, why? Yes, ma'am, could you please start the recording for this session so that later on we can reference to it? I can, but I believe this will be available on YouTube uh, all the while. But I'll start the recording. It's being screened over YouTube as well, ना? वहाँ पे available रहेगा ये. Okay, ठीक है जी. ma'am. Hmm. So we understand the concept of trading blocs. The countries come together to facilitate an unrestricted flow of goods and services. There can be various level of integration the bloc can achieve. A bloc can be a free trade area. A bloc can be a customs union. It either can be a common market. It can be an economic union or a political union. So these are the 5 levels of integration a bloc can achieve. And as we move down, the level of integration goes on increasing. So, with a free trade area, a bloc has achieved what? A bloc has achieved to have no taxes across the countries of the group, right? No tariff barriers across the countries of the bloc. That will be a free trade agreement, for example, NAFTA, SAFTA, or they will rationalize taxes among these countries. They will the taxes collected or non-tariff barriers imposed on the flow of goods and services are rationalized, are slashed down to facilitate the unrestricted flow of goods and services. So that's a free trade agreement. For example, India and European Union are also in these days in talks to achieve a free trade agreement between them. So they're negotiating in each and every sector where they can rationalize taxes among each other. Coming to customs union, can somebody tell what is a custom union form of trading bloc? They majorly have a common external tariff policies for imports from non-member countries, and for the member countries, they eliminate internal trade barriers. Correct, correct. So custom union will be free trade agreement between the trading bloc members, which means non-tariff, no tariff restrictions and less non-tariff impositions across the countries of the bloc. And along with it being a free trade area, there will be common tariff policies for non-members of the bloc. For example, European Union itself, uh, there are, I believe, 12 to 14, I'm not sure of the number, but these are the member nations in EU that have no taxes imposed in the flow of goods amongst themselves. Somebody was saying, Am I in the confusion? Isn't European Union
common market or economic union? It is it is Also share. it is an economic union, but it is also if it's an economic union, it has to be a custom union. For example, for any trading bloc to be a custom union, it has to be a free trade agreement, free trade area. Yes, ma'am. Right. So there you're right. EU is an economic union, but it also falls under the example of it being a custom union where they follow a common taxes for tax policy for with the non-European Union members. If there's some other example, you can quote here for customs union. Right. So for any trading bloc to be a political union, it will have to be an economic union before and common market even before and so on and so forth. So uh, customs union is something in addition to free trade area. The bloc being in addition to free trade area follow a common tariff and non-tariff policies with the non-members of the bloc. Next comes common market. Common market form of trading bloc would mean Common policies for the external members and no, that's achieved in custom union. So common market trading bloc is the custom union to है ही. Plus in addition to that, the movement of labor is unrestricted. Labor and capital, the factors of production, the movement of factors of production is also unrestricted. There are no barriers, no visa requirements for the movement of labor to work in the member countries of trading bloc. So unrestricted movement of factors of production or labor, so to say. Understood? so this means for non-member countries, they are restriction for the labor and the capital. They'll have to secure visa, they'll have to secure work visas for them to be able to enter the labor market of these countries, but the citizens of these countries itself can freely move from one country to another country within the bloc. They would not be imposed with those visa requirements, work visa requirements or PR requirements. Like being in Delhi, I can move to Haryana or Mumbai or Bangalore to work, right? I would not need any sort of work visa to work there. I would not, right? So that's how it is here with the trading bloc countries. So if the trading bloc is a common market, then the labor movement is also free. Next comes any doubt here? इकोनॉमिक यूनियन क्या होगा फिर? So in addition to being, for a trading bloc to be a common market, in addition of it being an FTA, custom union, common market, अगर common market है तो ये तो है ही. Plus the trading members or the trading bloc countries have a common currency. They have a common currency, they have a common central bank that formulates the monetary policy for all these trading bloc members. Like the European Union has euro. Like the European Union has, yes. Euro. Euro as its common currency, and there is a common central bank also that's located in Germany. Each trading country of, each country of European Union also have their
local central banks who are aligning their monetary policies with that of Germany. But the major central bank or apex body to formulate the monetary policy for all the members would be one. So that's economic union. And the last is political union. Can somebody tell what a political union is? Common government. Common government, correct. So say one parliament, either a prime ministerial rule or a presidential rule, but parliament be there's one parliament and a common government governing the states or the countries. So example of political union would be United States of America. So it is now a single country itself because it has achieved all these levels of integrations. Right. Now that was trading blocks. Now we move to some theories. You have also studied these theories when you did your international financial architecture, I believe, or maybe in when you did Yes, international yes, business as your international. subject, है ना? या Yes, कोई तो ma'am. सब्जेक्ट में आपने किए भी हुए हैं तो इसको हम थोड़ा सा we would not be spending a lot of time here. There's a lot to cover, but still very quickly we'll just give it a look. So international trade theories help us explain why explain the reason behind the flow of trade, the reason behind the direction of flow of trade, why a particular good is being sourced from one country and another good being sourced from another country, and why capital intensive goods are moving from developed economies to developing economies, and why labor intensive goods are. So it tries to figure out, it tries to first explain the benefits, how the whole world is at advantage or is benefited when international trade happens. When international trade is not restricted, it is a win-win situation for all the countries. So that's what these theories explain, and they also try and explain that why certain countries should stick to being stick to producing one particular good or a couple of goods, and they should facilitate trade. So, starting with absolute advantage theory given by Adam Smith. What does this theory say? Basically, in whichever production method or whichever goods or services the country is equipped with or have a peculiar advantage from the other countries, should that country should produce more of that good and should export whatever or should import whatever Import. they Hmm. uh, Hmm. Correct. Right. So produce and export those goods at which the country has an absolute advantage. Absolute advantage would mean that relative to other countries, this country is able to produce a certain good with lesser factor resource. Or with the given set of resources, it is able to produce more of that goods than other countries. So if country A yeah, for example, if Saudi Arabia has an absolute advantage in producing and refining what? Oil, oil. right? Russia is again has an absolute advantage in producing, refining oil and energy. So they should stick to that. They should be doing that and exporting it to the whole of the world and importing the other things at which they do not have absolute advantage, at which other countries may have an absolute advantage. So if it's probably Microchips, Japan, microchips in China because they have. semiconductor, right, right. Chip industry is basically there are only two companies. That too, मतलब mainly एक ही company है, वो भी ताइवान में है. Chip manufacturing. So if they are the ones exporting it to rest of the world. So they have achieved an absolute advantage in
producing chips, in manufacturing chips. US is trying, everybody is trying, but I think the market share that's held by this company, TEMC, I believe, I'm not sure of the name, but yes, uh, they should question. So the theory says that जहाँ पे the country is able to produce more of something with less of resources, more of output with less of input, they should stick to production of that. Right? अगर हम जापान की बात करें, what do you think Japan is being able to offer the best? Tech. There have been Japanese cars that have been very durable. We see Toyota. I believe Toyota is a Japanese company, and I believe Japanese Hmm. cars are known to be very durable and famous for this. So they have absolute advantage in that. Okay, so Toyota, that is a very specific case of Toyota where that's very right that perception for every Toyota car is that it has a major, it's very robust and it has a very high value in the second-hand car market also for a reason. So the value preserves for Japanese cars. But when it comes to automobile, I think Germany has also made a dent. Prominent dent in that industry. So Japan probably in the tech based products like high Electronics. tech intensive electronics again. So it is Japan, Germany. Then there is also electronics. में Sony कहाँ का है? Japan का है? Korea is Korea, also yes. Korea is Korea. also uh, very, I mean, a major market share Sony is of from Japan, ma'am. Sony is from Sony is Japan. from Japan, right? So yes, tech intensive goods from here, electronics आपके कोरिया से आ गए, automobile हमारा जर्मनी से आ गया. Japan has a blend of both electronics and automobiles. So yeah, Can we absolute do advantage theory हो गया. different? There are also the designer brands and companies that are mostly belonging to Europe. So we see most of the the internationally acclaimed designers, they belong to Europe. Be it British designers or That's a good example. French designers. So they are mostly famous for being coming from Europe and parts Europe. of England. Agreed. So yeah, even that. Okay, next is comparative advantage theory. It is an extension of the absolute advantage theory, in which even if a country does not have absolute advantage in terms of production, but compared to other country, if it has slightly better advantage in product A, so it would export product A and import product B, which country B has higher production capability in. All right, right. So it is an extension of absolute advantage theory. So other way of looking at it would be that if a country is able to produce multiple goods with an absolute advantage or with a comparative advantage, means they are able to produce better goods in across sectors vis-a-vis other countries, they should still stick to producing only those goods at which they have absolute advantage, in the sense that the one they have they can produce with the maximum output and minimum input. So for example, let's look at this example here. Here, across wheat and rice, which of these countries you think this is output per worker per day? So India is able to produce 5 units of wheat and 10 units of rice per worker per day, while Africa is able to produce 4 units of wheat and 4 units of rice per worker per day. So which country has an advantage in producing wheat? India. For wheat, both India and Africa, they have almost equivalent advantage. But if India were to choose the resources it wants to utilize in production of wheat and rice, it would prioritize rice and let Right. Africa take over the Go production of for wheat. right. Although India would have had India
had been producing wheat in comparison to Africa, it will still be able to produce more of wheat with less of inputs, right? But when wheat and rice are both compared, India has an advantage of producing more of wheat and more of rice. But the difference, it has a better advantage or a compare more. It would be more advantageous for it to produce rice and let Africa produce wheat. So that's a comparative advantage theory. So if the country is relatively better at producing a number of goods than other countries, it should still produce the good that it can with the lowest cost when compared to other trading members. So जहाँ पे उसका major advantage lie करता है उसको वही produce करना चाहिए. Next, we have factor endowment theory. What does the theory say? The theory given by Ellie Heckscher and Burton Olin. I believe that it is related to the utility of factors of production to specialize in production of goods or services that bring out the maximum output or return for the production. So, utilizing resources where maximum output could be achieved is what is emphasized in this. So, the theory says that a country should produce the goods for which it has abundant factors of production available. So if the country is a labor-intensive country, it has huge human capital with itself, then it should rather be entering into the industries that uses more of labor. For example, textile industry or agricultural industry. So depending upon the depending upon the factors it is endowed with, the country is endowed with. So if it's a capital, if US has less of labor but more of capital, it may choose to produce capital intensive goods than labor intensive goods. It may choose to produce AI or more of AI, deep tech, or tech heavy good that use a lot of R&D capital but less of labor. So the theory says if the country is endowed with a particular factor, for example, अगर चाइना में लिथियम बहुत है तो वो ईवी बैटरीज बना रहा है, या जो भी ईवी बैटरीज के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, अगर वो मिनरल्स किसी कंट्री में ज्यादा है तो दे शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड दैट यूटिलाइजेस दोज मिनरल्स, right? So hence it's known as a factor proportions theory. One should specialize in the production of goods on the basis of the availability of factor of production with them. So the theory was also challenged by a professor, Vasily Leontief. He, on the basis of data, disregarded the theory. It was the research study of the professor was able to point out that many capital endowed countries were still producing labor intensive goods and services. So that was there because sometimes factors of production, merely land, labor, capital is one part of a country blooming in the production of a certain product. There are many other factors that affect the policies, affect the the competitors, affect the kind of consumer base there affects. So there are many factors that affect the production of a particular good or a highly specialized good in a country for it to be export ready. So that's the theory was disregarded by Vasily Leontief in his research study. But it also holds true in some parts of the country, in some parts of the time. अगर हम देखें तो Bangladesh, again, it's a labor intensive, less of capital. It has major textile industry there, shoemaking manufacturing industry there. India, maybe we are into agriculture, textile. We still do not have our own AI models. So there's difference. Climate and weather conditions can also make a difference here. I think that the example given in the Leontief paradox was that
America is a huge producer of corn, even though it is a Mm, capital-based industry, because the mm, environment and climate is suitable for production of corn. gone. So Mm. even being a capital-intensive country, It they are was doing a exporting. labor-intensive. Correct, correct. So even climate, there are many factors that affect the production or that affect the blooming of a particular industry in a country. So that was factor endowment. Next is Michael Porter theory. Okay, this is the last theory we discussed, Porter diamond model. Again, what is it? What does this tell? The national competitive advantage theory. So Porter diamond model basically points out the four major factors that leads to flourishing of a particular industry in a particular country. For example, first one is of course the factors the country is endowed with. So factor endowment theory is subsumed within the Porter diamond. It's one part of the factor, one part of the reason why a country will specialize in production of a particular product. So factors of production will matter, of course, and factors of production will include everything from human capital to the education level to the kind of human capital they possess, right? The kind of labor they possess, whether it's skilled labor or an unskilled labor. Then there will be the tech कितना है country में, and technology, capital, land, weather conditions, climatic conditions, the kind of minerals that are available, all of that will be part of factor conditions. So factor conditions matter सबसे पहले. And what else? Second is this demand condition. What does demand condition mean? Basically, the demand of particular product by the consumers. So demand condition would mean the kind of consumer base there is, whether they're demanding, whether they want to use highly sophisticated product or whether they are okay with less tech product. हाँ जी, तो मेरी क्लास चल रही है. All right, I'm so sorry. So demand conditions. So consumer, the kind of consumer preferences will affect the formulation of a product. So if let's say Germany, the consumers demanded small cars, high utility car, it helped the automobile industry in Germany to flourish. So if they whether they require highly sophisticated, high tech product, eventually the incumbents or the companies that are into that industry will try to satisfy the demand of their domestic consumers first. With that, will they be able to achieve a certain level of sophistication in their product? So demand conditions matter. Next is relating and supporting industry. What does that mean? It is related to the industry environment, be it the same industry as the one that the firm works in, and how Mhm. the industry dynamics are working, and also the other industries that may be Mhm. related to supplementary goods or competitive goods, and how the dynamics are working in all these industries, because these are the external factors that affect the output or the Right. profits of the company. So, very rightly mentioned. One is the competitive structure of the industry itself, the kind of competitors, whether it's a monopolistic competition, whether it is oligopoly, whether there are many competitors, and it is the perfect competition kind of market.
So the competitor base will have an effect if it is monopolistic competition, then everybody try to snatch the market share from another, and for that they have to work on their product, work out on their products, bring value to their products. So that's one, the kind of competitor structure or the kind of competitive standing there is in the industry. Second is the ancillary industry, the supporting industries, because that helps in the value chain of the product. So whether the ancillary industries, the infrastructure, the raw material, the telco, telecommunication, whether they are facilitating the growth of the product or not. So both the industries will matter. The industry itself, in the sense that the kind of competitors there are, जितना competitiveness ज़्यादा होगा domestically, उतना good अच्छा बनेगा country में. Or second would be the supporting industries, because that facilitate the value chain, the supply chains in the country itself. So that, and the last will be the form, strategy, structure, and rivalry. अच्छा rivalry तो यहाँ भी आ गया, the competitors. But apart from that, the kind of the layout of governance in the companies, the strategies the companies are taking, their internal structure, how a company is governed will also have a bearing on the good or the final product that comes out, right? So anything around this one? Form, strategy, structure, and rivalry. It could be like as a correlation to the bottom point, which is relating and supporting industry, like that is the external environment. This is relating to the internal environment of the Internal company, environment of the company, factors that right? they can mostly control and work around to Right. maximize the production and output. Correct. Mm. Okay. Right. Very rightly said. It is internal to the company and factors that can be controlled. Yes. So that was Michael Porter theory. Now we move to how the international monetary system has evolved. This is something that is specific to our subject, which is international financial systems. We 1875 onwards till 1914, majority of the countries or the countries that were involved in international trade were following the gold standard, and they switched from gold standard to a flexible regime in during the war period, and then again they shifted to Bretton Woods after 1945. So let's first discuss the gold standard. 1875 to 1914, the gold standard was prevailing in majority of the trading countries. What was gold standard? Gold Basically, standard. the amount, the money supply is pegged to the gold value in a country. Okay, so money supply has to be backed by the gold reserves of the country. That's one. What else? Since the amount of gold reserves that a company could Country. hold with them, that was volatile. So this system was generally not considered a very good one, because the amount of production of gold was not equivalent to the trade that the companies were participating in, and maintaining their value of their currency as opposed to gold was becoming difficult with time, especially in volatile times, especially during the World War One. Wartime. Mhm. And Correct. gradually, that is why the country shifted towards flexible mode, that is the dollar-backed gold system called the Bretton Woods standard. Right. So
gold had deflationary impacts, limiting impacts. It was difficult for the country to maintain the value of their currency with gold. Uh, that there comes the limitations due to which we moved to or switched to another regime. So, what was the regime? The currency of the countries were pegged to gold. Their value was fixed to gold, pegged to gold, right? जैसे अभी क्या है अभी हमारी वन वन 10 grams of gold का प्राइस कीप्स चेंजिंग अप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग मेनी टाइम्स अप्रिशिएटिंग जैसे अभी करंटली इट वाज 87,000 और मोर में भी तो अगर It's गवर्नमेंट 1 lakh. फिक्स ही कर दे इट्स 1 लाख क्या Yes, 97 ma'am. 1 lakh. ओके तो चलो 1 लाख ही ले लेते हैं तो अगर गवर्नमेंट फिक्स ही कर दे दैट 1 gram of gold will be 10,000 rupee राइट तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया लेट्स सपोज यूएस गवर्नमेंट फिक्स कर दे 1 gram of gold is equal say $500. So if every government goes on pegging their value of currency to the gold, in a way they have pegged their value of currency across each other also. So ideally, government क्या कह रही है कि 10,000 रुपए दोगे तो वो 1 ग्राम गोल्ड देगी ये इंडियन गवर्नमेंट कह रही है ऐसे ही यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि अगर $500 दोगे तो वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देगी सो इन अ वे रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या बन गया 10,000 rupees for $500. which means what which A means fixed rate. 100 rupees for $5. Or 20 which rupees for also $1. means 20 rupees for $1. So value of dollar is 20 rupees and value of 1 rupee will be these many dollars, correct? So in a way they have also pegged their currency values amongst each other, against each other. So that was gold standard where every country pegged the value of their currency to that of gold and in a way they pegged the value of the currencies against each other and hence it was a fixed exchange rate regime. So let's suppose as per these values $1 should be 20 rupees if in the market for a direct dollar rupee trade, if in the market dollar is being sold and bought for 25 rupees, which currency is overvalued and which currency is undervalued? Indian rupees is undervalued. Indian rupees is undervalued and dollar is overvalued, correct? So in that case, how this disequilibrium in the market be brought back into equilibrium, what will you do? You know that this is true. The American government is ready to give you 1 gram of gold for $500, and Indian government is ready to give you 1 gram of gold for 10,000 rupees. Ideally, this should be the exchange rate. But foreign exchange market mein for a direct dollar rupee trade, this is what is going on. So is there a way you can make profit out of it? So market mein what is undervalued? This is undervalued rupee INR and dollar is overvalued. Something that is overvalued, would you sell it? Would you buy it? Sell. So you sell this and you buy rupee. So what you do is you borrow, say $10,000 you borrow or you sell it in the market and get it converted into rupees. How many rupees will you get? $250,000, is that correct? $10,000 मैंने बेचे
मार्केट में 2.5 लाख रुपए बन गए. इसको जाके आई कैन go to Indian government or RBI and get this rupees converted into gold. How much of gold will I be able to buy out of these many rupees? बताओ. 10,000 रुपीज से अगर 1 ग्राम मिलता है तो इससे कितना मिलेगा? 25 grams of gold? Yes? Yes, no. Yes. Now you can move to Federal Reserve, sell this gold for dollar. How many gold will you be? How many dollars will you be able to get out of this much of gold? 50 ग्राम गोल्ड बेचोगे तो कितना डॉलर मिल जाएगा? 500 into 25. 125. $12,500. Yes, no. No. So you started out with $10,000. You end up with $12,500. You have made yourself a profit of $2,500 without taking any risk. So this is the arbitrage process that you got yourself into. You sold dollar for rupees. You sold rupees for gold. You sold gold for dollar back. So you started with $10,000 and now you have $12,500 in your hand. So everybody does the same. If such kind of disequilibrium exists in the market, everybody goes in the market and sell this, buy this. When you start selling a currency and buying another currency, what happens? The value of the currency you are selling will go down and the value of the currency that you're buying will go up. And this will keep on happening till the balance is reached back. So the equilibrium is back. So equilibrium क्या है? That $1 should equal to 20 rupees. Market में क्या चल रहा है? $1 equal to 25 rupees. So gold standard made sure that any disequilibrium in the foreign exchange markets will settled by itself by the market play of demand and supply. So that was one benefit of gold standard. Once every country peg their currency with that of gold, they are able to peg each other currencies amongst each other. And the reason behind going for gold standard would be to encourage trade, because fixed exchange regime is the only regime where there is no uncertainty whatsoever. I know that if $1 is equal to 20 rupees today, it will remain the same tomorrow, day after, 1 month after, years after. That's the beauty of fixed exchange regime. There is no uncertainty. Okay, so that was one, and there's another benefit of gold standard, which is price specie free flow mechanism. You remember us discussing that? Yes. So it says that no country can consistently, perennially be in surpluses or deficits, right? So if a country is in surplus vis-a-vis other country, that means that the country that is in surplus will also have an inflow of gold, which means their money supply will increase, and increase in money supply will induce inflationary pressures. And due to those inflationary pressures, the country will lose on trade because now their goods will become pricey. So eventually this money supply will eventually this surplus will wean off. Similarly, if a country is facing deficit, they will experience an outflow of gold
और जब गोल्ड जाएगा तो गोल्ड जाने का मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? मनी सप्लाई विल गो डाउन and decrease in money supply will have a deflationary pressure, making their goods more competitive in the foreign market. Right, deflation की वजह से उनके goods competitive हो जाएंगे and trade will rise again. So in gold standard again, no country can perennially face surplus or perennially face deficit. That is price specie flow mechanism. And lastly, we have already discussed that what was the shortcoming of the standard that the countries had to shift to the other kind of international monetary system. So gold standard se hum Bretton Woods mein directly we didn't step in. There was a major gap of 20, 30 years. We most of the countries suspended gold standard in 1914, just before the World War One, or as the World War One began, and Bretton Woods came into picture in 1945 when World War Two also concluded. So this period, also known as the interwar period, was the period where there was no fixed regime that was being followed globally. Some countries were uh, letting their currencies valued freely amongst other currencies. Some countries were trying to get back on gold standard, but were not able to do it fully, were not able to um, adapt to the rules of gold standard fully. They were not letting the flow of gold affect their money supply. So this interwar period was a period of turbulence, and there was no systematic international monetary system that existed during this period. So reason kya tha? Why everyone suspended gold standard? I think one of you have already mentioned that gold volatility का इतना कुछ नहीं है. It's just that gold is a natural resource, and like any other natural resource, it is also limited. And if every money that is being circulated in the economy has to back with some portion of gold, that means that it will have a limiting impact on the overall money supply of the economy. You cannot go on increasing money supply without your gold reserves also swelling. जब तक gold reserves नहीं बढ़ेंगे तब तक आप money supply बहुत नहीं बढ़ा सकते हो. So it had a limited impact on the trade requirements. Ki bhai countries, as they were moving ahead, they were increasing trade amongst each other. They wanted to also, because now they had to fight the war, they would need more money so that they can produce more arms and ammunition, and they could not let gold be a factor to determine the amount of money supply they could have in the economy. So gold could not fulfill the demand of the money supply there was during that time across countries. Gold had deflationary impact. There will be only certain level of money supply one can have in their economy because it is the gold they had to back their money supply with. Right. So gold standard हो गया. Then interwar period discuss कर लिया. Now coming to Bretton Woods. So what was Bretton Woods standard? Now the money supply is indifferent from the gold reserve. Now the money supply. Is indifferent from the gold reserve the country carry. Mhm. So the standard made sure that money supply was not restricted because of the amount of gold reserves the country possessed, but how? So in Bretton Woods standard, every currency was pegged to which currency? Dollars. They were all pegged to dollar. Correct. So rupee dollar rate was defined by Indian government. Euro dollar rate was defined by the European Union countries. Pound dollar rate was defined by UK, and so on and so forth. Every currency was now pegged to dollar, and dollar was the only currency that was pegged to Gold. gold.
right? So now, if Indian government had gold in their reserves or they had dollar in their reserves, it was okay. I mean, they could have more money supply in their country because gold was not the defining factor of the money supply in most of the countries, right? So if the dollar became an additional currency which they can have a backing of, and because it was a currency, the foreign reserves was also became an income yielding asset. So gold as the reserves would not yield any income because gold का तो प्राइस फिक्स कर दिया, बढ़ तो रहा नहीं, कैपिटल अप्रिसिएशन हो नहीं रहा, और nobody is giving interest on gold. सो इनकम यील्डिंग एसेट नहीं था रिजर्व्स. अब क्योंकि डॉलर भी एक फॉरेन रिजर्व की तरह करेंसी यूज हो सकती थी, एंड डॉलर denominated treasury bills, dollar denominated bonds, they're all income yielding assets. So countries were able to earn income on their reserves as well. So that was also a positive to this point कि गोल्ड से डिपेंडेंसी भी हट गई कंट्रीज की, और जो अब रिजर्व बना वो इनकम यील्डिंग एसेट भी हो गया. But where did the problem come? Why did the system collapse? Rather, a professor, Robert Triffin, I believe, he has already predicted that the system is programmed to collapse, known as Triffin paradox. So, Bretton Woods system meant that would want to have every country would want to have more and more dollars Dollar. because dollars is a reserve currency now. So everybody would want to sell to USA so that they can have more dollars. They would want to sell more to USA vis-a-vis what they buy from USA. They would want dollar to be invested in their country. They would want capital flow of dollar in their countries. So it created a pressure on dollar. Because जो भी foreign reserve currency है, if there's only one reserve currency, every country would want to keep more and more reserves of it. And for them to have more and more access to it, they'll have to sell to USA. They would lure the investors, US investors, to invest in their countries or invest in the securities of their companies or government. So that started happening, and of course US was running on deficits. So jo bhi currency becomes a reserve currency, it will be perennially in deficit. It will have to face deficit consecutively, consistently. But if any currency that is facing deficit every year, how long can that currency be trusted? Trust issues will come up कि भाई इतने डॉलर globally flow हो रहे हैं. Will, if at all, European countries, if they collect all their dollars, go to Federal Reserve and ask to convert it into gold, because at the end of the day, it was dollar-based gold exchange rate. So will the US government be able to fulfill its obligation? जो उन्होंने $135 equal to 1 ounce of gold रखा हुआ है rate, and now every country sitting on piles of dollars have dollar as their reserve currency. So if every country asked Federal Reserve to liquidate or convert it into gold, will it be able to do it? Because the country itself is facing deficits. And and that led to the collapse also. Continuously inka deficit ho raha tha, the deficit was increasing. France was the first one to bell the cat. France was the first country that went and liquidated their dollar holdings.
And that's when it was realized that there is a problem in the system. Everybody started liquidating, pressure on dollar went on building, and eventually dollar had to be devalued vis-a-vis gold. Other currencies had to be revalued vis-a-vis dollar to stabilize Ma'am, the regime. ma'am, some student is in the lobby. Perhaps they just messaged me. Right. So this was Bretton Woods system, and dollar being the only foreign currency that could be used as reserve, and dollar was the only currency that could be converted into that was freely convertible into gold. It created a pressure on dollar. Everybody wanted to have more and more dollars, and eventually the system collapsed. There were many agreements, Plaza Accords, Smithsonian Agreement, that were the efforts were made by various countries to stabilize the system, to let the system work out. The currencies were revalued against dollar. Dollar was devalued against gold. So many policies were arrived at, but nothing really worked. The pressure on dollar kept building. The deficit problem could not be resolved, and hence Bretton Woods system was given up. And it was in 1975 onwards, I believe. I'm not sure of this year, but I believe around this year, almost all the countries had moved away from Bretton Woods standard and had entered into a flexible exchange rate regime, a free or managed float kind of regime. Flexible exchange rate regime is guys, flexible exchange Nothing rate is regime. pegged to. A currency's value is not pegged only. It is not pegged to any other currency. The value of currency is being determined by the supply and demand of the currency. So demand for dollars in India and supply of dollars in India can have an effect on the dollar rupee exchange rate. Similarly, demand of rupee in US and supply of rupee in US will also have a dollar rupee exchange rate, will also have effect on the dollar rupee exchange rate. अगर यहाँ पे डॉलर की डिमांड ज्यादा है बिकॉज पीपल वांट टू बाय अमेरिकन गुड्स और वहां पे रुपए की सप्लाई ज्यादा है बिकॉज दे हैव रुपए की सप्लाई ज्यादा है which mean they are selling a lot to Indian consumers. That would depreciate the value of rupee and appreciate the value of dollar. So flexible exchange rate regime, the value of currencies vis-a-vis another currency will depend upon their demand and supply in the forex market, right? Alternative exchange rate regime. So there have been various kind of exchange rate systems that have existed globally, or that may also be in existence currently in some part of the globe. So, for example, there's something known as no separate legal tender. Here, what happens is that the country adopts currency of another country as its legal currency and does not have a separate legal currency of its own. So currency of another country is considered as a sole legal tender in the country.
They do not have a currency of their own, or they may have it before, and now that they have dollarized themselves, let's suppose they have gone into dollarization. So the government has announced that now dollar will be the legal tender, will be the medium of exchange in the country. So whichever currency existed before this will lose its value or will have to get converted into dollar, and then dollar will be supplied, and the medium of exchange will be through dollar. Every denomination will take place in dollar only. So that is no separate legal tender exchange rate regime. When we did it in depth, we also understood how the various benefits of it, and of course the various uh, problems that are associated with dollarization or euroization, or accepting another country's currency as your own currency. So no separate legal tender is one kind of regime. Another is currency board arrangement. Currency board arrangement is where the currency of one country is fixed to, or pegged, its value is pegged to currency of another country, and there is a particular institution, a currency board that is formed, that has to maintain the pegged rate, and hence the money supply in their country has to be backed by the reserves of this currency. So if, let's suppose, one peso is equal to $50, no, sorry, 100 peso is equal to $50. Let's say Argentina has gone into a currency board arrangement, which it had before. So 100 peso, let's suppose, is equal to 50, is equal to $1, right? So they have to maintain this peg. There is a particular governing authority that has to make sure that this exchange rate is maintained. And how will they be able to maintain this exchange rate? By keeping enough reserves. So अगर economy में 1 lakh pesos circulate हो रहे हैं, तो उनको $1,000 अपने किटी में, अपने रिजर्व्स में बैक रखने हैं. एज इन कि कोई भी अगर पीसो को कन्वर्ट करने डॉलर में आ जाए, तो you should be able to fulfill the obligation of $1 equal to 100 peso. तो अगर ये तो बने 1 lakh peso का एग्जाम्पल है. So if it's billions and trillions of peso are being circulated in an economy, enough dollars have to be maintained, and वो काम किसका होगा? वो currency board का काम होगा. तो it is a very stringent form of fixed exchange rate regime. है ये fixed exchange rate regime ही. Right? Any doubt here? No, ma'am. Okay. Then there is conventional peg, where you again peg the value of a currency vis-a-vis another currency. और जब आपने एक बार अपनी करेंसी, अगर एक हांगकांग डॉलर को यूएस डॉलर से पैग कर दिया, तो इन अ वे यू आर आल्सो पेगिंग योर वैल्यूज विद अदर करेंसीज. मतलब अगर आपने 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू 1 USD कर दिया और पैक कर दिया, अब अगर डॉलर रुपी के कंपैरिजन में या विज़ रुपी अप्रिशिएट होता है, तो एक तरीके से हांगकांग डॉलर भी विद इन द सेम प्रोपोर्शन अगेंस्ट आईएनआर अप्रिशिएट हो रहा है. सो वो इफेक्ट और सबके करेंसीज के साथ भी पैग हो जाता है. The difference between currency board and conventional peg है दोनों ही fixed exchange rate regime, but here the country needs to have a separate governing body that has to maintain the peg. It has to maintain enough reserves. यहाँ पे there is no explicit legislative body that is doing that. Next is crawling peg. Crawling peg arrangement कौन सा होता है?
It's again the fixed rate regime wherein a foreign domestic currency peg its currency value to other countries' Mhm. currency value. And how it's different from conventional? So basically, here the demand and supply comes into Hmm. force. Hmm. 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 So the pegged exchange rate is allowed to move within a certain band if there are factors that are if the demand for the currency is high, it will be revalued against the pegged currency. If the demand has gone down, supply has gone up, it will be devalued again. So करेगा ये government ही. मतलब the government has fixed the rate and that fixed rate can change periodically to reflect the changes in money supply and demand and supply of the currency. So that's crawling peg, जहाँ पे the pegged rate is allowed to be changed or to reflect what's happening in the market. Next is managed float. Managed float क्या हो गया? What kind of regime is that? Basically, the rate is determined by the market forces, but not completely. Government has certain intervention in between, when or if needed. Right. So right. So government has a certain band in their mind within which they would let the rate get determined by the market forces of demand and supply. But if the value goes too high or goes too low, they will intervene in the market, offload the currency or buy some currency to bring them back into that band. सो मैनेज फ्लोट क्रॉलिंग पैक में डिफरेंस क्या है कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regime है while managed float is a flexible exchange rate regime. But in this flexible exchange rate regime, it's not completely intervention free. The government keeps intervening to to iron out the unwarranted volatilities कि भाई बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, तो उसको आयरन आउट करने के लिए उसको ठीक करने के लिए वो आ सकते हैं. Last is free floating where the government does not intervene at all. ठीक है बहुत टाइम तक जैसे INR was into managed float regime where government will be going for open market operations many times so that they can bring the rupee back into its band. Even China followed this that they would never let the currency, the Chinese yuan, appreciate to a greater extent जबकि उनके resources ज़्यादा थे or they were exporting a lot and yet to keep the prices of their goods artificially lower they would not let yuan go very high. So that's also a managed float kind of a regime. ठीक है जी, anything you want to say or ask here? But right now, all the currencies values are basically following the free float regime, right? Yes, yes, many of the currencies are into free float regime. Oh, Okay, last but not least, the difference between fixed and flexible exchange rate regime. We already know the conceptual difference. Which of the regimes are is more favorable for regional economic integration or for international trade to happen without issues or without uncertainty? flexible. Mhm. देखो फिक्स्ड का सिर्फ एक ही बेनिफिट है which is this that it supports international trade. If there is no uncertainty, it enhances, it encourages um, businesses to go to supply abroad or to procure from abroad, procure from other countries because the currency value is stable. They can have contractual commitments and the value won't change. So flexible का यही drawback है because it's flexible. You never know कि कब it becomes expensive for me, and if I enter into a contractual commitment where I have to pay $1 lakh in 3 months, it may mean 87
87 something rupees today, but it may also mean after 3 months that I'm paying them 90,000 something or more, right? So flexible exchange rate regime, it increases uncertainty for the factors and discourages the international trade. But the problem with fixed exchange rate regime is to maintain the peg, the government has to give up on their monetary policy or they have to deploy their monetary policy to maintain the peg. So, agar this is the value that they have pegged at, say £1 is equal to $1.6. But in the market, the demand for um, dollar has gone down, and the demand for pound has gone up. So this is the rate that's there in the foreign exchange market. Flexible में तो क्या होगा? This will be the new rate now. पहले अगर £1 equal to $1.6 था, and now if the demand for pound has gone up and demand for dollar has gone down, the new rate will be £1 is equal to $1. The government will not have to intervene, will not have to take policy measures to bring it back or anything. But at fixed exchange rate regime, they'll have to follow a contractionary policy. They'll have to decrease the money supply, have a deflationary impact and effect in their economy, so that prices goes down. The trade can get the trade can increase, international trade can increase, and the the demand for dollar goes up, demand for pound goes down, and hence this 1.8 becomes 1.6 again. So to be able to maintain the peg, government had to repetitively deploy policies which may not be in line with their national requirements. Their sovereign requirements may be something else. They may need to kickstart the economy. They may need to have more money supply. They may need to contain the impact of COVID. It could be anything. So उनके national requirements कुछ हो सकते हैं, but क्योंकि peg maintain करना है, इसके लिए उन्हें बार बार ही policy deploy करनी पड़ रही है, जिसकी which is not in line with what their country needs to grow. That's the problem with fixed exchange rate regime, that to maintain the peg, they have to forego their national requirements or national priorities. And hence, most of the countries have now uh, are now following flexible exchange rate regime. Okay, with this, we are through with Unit 1. If there's anything you guys want to understand or ask, and you can ask. Otherwise, we'll start with Unit 2. All right, then. So, Unit 2 comprises of two things. First, we got to understand what foreign exchange market is, how currencies are quoted in foreign exchange market, all of that, and then international parity relationships, how certain macroeconomic variables predict changes in exchange rate, international parity relationship. Right. So, सबसे पहले, what is a foreign exchange market, guys? Market wherein you buy or sell foreign currency for different Right. purposes. Right. So, buying and selling of currencies is facilitated by this market. Uh, so, we have spot market or cash market, forward market. What's the difference? Spot market wherein immediate transactions happen.
And for future and forward market, there is a contract wherein it's a 3 month or a certain month contract wherein we will sell or buy the currency at a fixed period of time at a fixed rate or Correct. Correct, correct, correct. So spot market is if I go to a forex dealer right now and take my certain amount of rupees and get it exchanged for dollars, get it exchanged for Japanese yen or anything. So anything. So when I get the currency converted on real time basis at the current rate for an immediate delivery, that happens in spot market. While in forward market or future market, we are it is an agreement to buy or sell a particular currency at a particular rate, at a particular price, at a particular date and time, right? So contractual agreement है जहाँ पे I may be selling rupees, buying dollar for a certain rate after this time from somebody. फॉरवर्ड मार्केट में फ्रॉम somebody OTC होता है, फ्यूचर मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सो आई कैन टेक पोजीशन डॉलर INR का कॉन्ट्रैक्ट है, येन INR का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर यूरो INR का कॉन्ट्रैक्ट है. I can take long and short position. A long position would mean that I'm agreeing to buy the foreign currency at this rate at this time, while position will mean that I am ready to sell this foreign currency at this rate at this time, at this date, right? So that's that. How is a currency pair denoted? It is denoted in this form SJ by K, where we are saying that, so if it is USD INR, if it is USD INR equal to 80, it means that value of jth currency in terms of K. It means that value of dollar is equal to 80 rupees. So value of J in terms of K. This is how we have to read it, right? So if JPY INR is say 100, it means 1 yen is equal to 100 rupees. If rupee pound is 20, it means 1 rupee is equal to 20 pound. So this becomes your quote currency. Kth currency becomes your quote currency. And jth currency becomes your base currency. मतलब value of J, 1 unit of J in terms of K. Quotation किसके टर्म में है? USD INR में. INR rupee $1 is equal to 80 rupees. So quotation किसके टर्म में है? 8 rupees के टर्म में. So K is the quote currency, J is the base currency. Value of J is being stated in terms of K. Understood? Direct quotation, indirect quotation. Direct quotation will be value of foreign currency in terms of domestic currency. Indirect quotation is value of domestic currency in terms of foreign currency. So for us, USD INR is a direct quotation or an indirect quotation? direct. It's a direct quotation because it's value of dollar in terms of rupee. Correct. Next, bid ask. Bid ask is, tell me. Buying and selling from the point of view of the market trader. Trader. So bid rate would be the rate at which the trader is ready to buy the currency, and ask is the rate at which the dealer is ready to sell the currency. Correct. So if it is this, uh, if it is subscripted by A, that means it's an ask quotation. But ये किसका ask quotation है? ये डॉलर का ask quotation है या ये पाउंड का ask quotation है? Rate at which dealer is ready to buy. Ask है तो buy, sorry, ready to sell. Ask है तो ready to sell. He is ready to sell what? Is it the dollar ask quotation or the pound ask quotation? कोई बता सकता है? Dollar.
राइट, करेक्ट। जो भी हमारी बेस करेंसी होती है जिसकी वैल्यू बताई जा रही है उसी का ही बिड वैल्यू है या आस्क वैल्यू है। बिकॉज डॉलर पाउंड इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि $1 इज इक्वल टू 10 पाउंड्स। तो अगर ये आस्क कोटेशन है, सो दिस इज द रेट एट विच द डीलर इज रेडी टू सेल डॉलर एट। डीलर इज रेडी टू सेल डॉलर एट 10 पाउंड्स, राइट? Also, do you understand this quotation here? अगर let's say USD INR is 80, I can find INR USD also. Can I? Yes. How? First, we need to find the base bid and ask, and then we नहीं, get. बिड एंड आस्क छोड़ो, बिड एंड आस्क छोड़ो अभी। अभी सीधा बताओ, अगर तुम्हें ये डॉलर रुपी का रेट मालूम है, एक्सचेंज रेट, तो क्या रुपी डॉलर का निकाल लोगे उससे? No. बच्चे, अगर आपको पता है कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, क्या आप ये नहीं निकाल सकते कि 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर हुआ? Yeah. कैसे बताओ, कितना हुआ? 1/80. 1/80, करेक्ट। तो ये तो बेसिक है कि SJ/K is equal to 1/SK/J, करेक्ट? तो बस अगर ये द ओनली डिफरेंस इज कि अगर ये बिड कोटेशन है JF करेंसी की, तो इट विल बी इक्वल टू 1/S आस्क कोटेशन ऑफ K/J। क्योंकि अगर लेट्स सपोज इट इज, अब मैं इसके आगे लगा दूं बिड, सो द डीलर इज रेडी टू बाय। अगर डीलर USD बाय कर रहा है इस 80 रुपए के हिसाब से, तो वो कौन सी करेंसी सेल कर रहा है? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एक करेंसी अगर खरीदी जा रही है तो दूसरी करेंसी डेफिनेटली बेची जा रही है। तो अगर ये बिट कोटेशन है, डीलर इज रेडी टू बाय $1 फॉर 80 रुपीज, सो विच करेंसी इज इट सेलिंग? INR. INR। सो ये जो SK/J, सो ये जो केएफ करेंसी अब आ गई, एक सेकेंड, जैसे ये था SB/USD/INR, this will be equal to 1/S INR/USD। अब इस कोटेशन के हिसाब से डॉलर वो खरीद रहा था और रुपी वो बेच रहा था। तो जब बेस करेंसी रुपी बन गया, तो रुपी को क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है? इज इट बीइंग बॉट और इज इट बीइंग सोल्ड? It's been sold. इट्स बीइंग सोल्ड, एंड हेंस यहाँ पे आस्क कोटेशन आ जाएगा। So all I'm saying is we already know that USD INR rate will be equal to 1/INR USD rate. This we already know. But अगर इसके साथ बिड आस्क लग जाए, तो ये बन गया डीलर का बाय रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी। इट विल बी इक्वल टू 1/ डीलर का सेल रेट ऑफ रुपी फॉर डॉलर। सो SJ/K, Ma'am, हाँ जी,
Actually, somebody is waiting in the lobby. आप इसे enter कर दो. Yes, ma'am. Somebody is waiting. Okay. Admitted. All right. Okay, क्रॉस रेट्स भी हमने किया था, कोई बता सकता है क्विकली? Basically, a common currency comes into contact. Very So sometimes in the market, we may not be able to directly trade, say, I want to trade yen into euro. ठीक है, or euro into yen. I want to get out of yen, enter into euro. But there is no direct trading desk between yen and euro. I know that I can trade yen for rupee and I can also trade rupee for euro, but there is no particular trading desk that is ready to buy yen, sell euro, or buy euro, sell yen. So there's no direct trading desk. So in that case, how will the rate be computed between yen and euro if there is no direct trading desk and a desk that is determining the rate directly between yen and euro? We can have a common currency come into picture where I can find um, येन रुपी का रेट, रुपी यूरो का रेट, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये किसका रेट आ जाएगा मेरे पास? येन यूरो का रेट. And this is cross rate. When you compute the exchange rate between two currencies using a common currency. Right? For example, we have in this big question, we have yen Canadian dollar का rate, Canadian dollar dollar का rate, Canadian dollar US dollar का rate. Can we find the rate for yen and US dollar, the rate between yen and US dollar? Quickly guys, करा हुआ है question. सेम पीपीटी है, कोई मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया. करो ये सॉल्व क्वेश्चन. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? multiply. We'll multiply it, right? येन पर कैनेडियन डॉलर का रेट है हमारे पास और कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर का है. वी कैन मल्टीप्लाई एंड फाइंड द रेट बिटवीन येन एंड डॉलर. और यही अगर मुझे यूएसडी पर जेपीवाई का रेट चाहिए होता, इन दैट केस वुड इट चेंज? इट वुड नॉट, क्योंकि so I would need USD per CAD into CAD per JPY. तो USD पर CAD हमारे पास नहीं है, बट वी डू हैव कैनेडियन डॉलर पर USD. We can find USD per CAD, करेक्ट? इसका रेसिप्रोकल हो गया. और इस केस में
येन पर कैनेडियन डॉलर तो है, बट कैनेडियन डॉलर पर येन नहीं है। क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 JPY। 2.25। बस we solve this and we get USD per JPY. Correct. So this is how cross rates are computed. Cross rates with bid ask quotation. So if let's say मुझे USD JPY और JPY INR का रेट गिवन है और मुझे USD INR का रेट निकालना है। अगर बिड कोटेशन निकालनी है तो मुझे दोनों का बिड कोटेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आस्क कोटेशन निकालनी है तो दोनों का आस्क कोटेशन ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब क्रॉस रेट से we come to the concept of triangular arbitrage that triangular arbitrage is when you are able to find discrepancy in the cross rate and the direct rate. For example, here you have the rate for USD INR, you also have the rate for USD JPY and JPY INR. So when I compute the cross rate multiplying these two rates, the rate I get is, if it varies from the USD INR rate that is being currently traded at, जिस रेट पे एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है, in that case you can make riskless profit by taking the right positions. For example, यहाँ पे क्वेश्चन वैसे तो आई थिंक तुम लोग कर चुके हो, बट ठीक है, you can have a look at the question and tell me if you will be able to solve a question like this. एक इजी एग्जांपल लेते हैं पहले। So I know that $1 is equal to say 80 rupees, and I also know that $1 is equal to £1, hypothetically. But £1 is equal to, there is a bank that is selling £1 for 85 rupees. So this is the direct rate quoted by the bank between pound and rupee. So looking at these rates, can you strategize to make a profit? $1 अगर 80 रुपए का मिलता, Rupee बोलो। is basically undervalued. So we should buy more and more in order to get profit. तो ये बैंक ने रुपी को अंडरवैल्यू किया हुआ है। सो बनता क्या है, जो रेट बनता है इनका, दैट इज £1 इक्वल टू 80 रुपीज। लेकिन दिस बैंक इज सेलिंग £1 फॉर 85 रुपीज, मतलब बैंक ने पाउंड को ओवर वैल्यू किया हुआ है, इसको अंडर वैल्यू किया हुआ है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज, जो ओवर वैल्यूड होता है उसको सेल करते हैं, मैं बैंक के पास जाऊंगी, उसे पाउंड सेल करूंगी। सो आई सेल पाउंड टू गेट रुपीज। तो तीसरी करेंसी कौन सी है अपनी? डॉलर। सो यहां से मैं शुरू करती हूँ डॉलर से कि मैंने $1 लाख
बोरो किए, $1 लाख जाके मार्केट में उसके पाउंड ले लिए, वो पाउंड को सेल कर दिया इस बैंक के पास जाके इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और फिर रुपी को मार्केट में जाके डॉलर में सेल कर दिया. सो इफ आई स्टार्ट विद $1 लाख, हाउ मेनी पाउंड्स डू आई मेक इन द मार्केट? आई गेट हाउ मेनी पाउंड्स? बताओ. $1 इक्वल टू कितने पाउंड्स है? $1 lakh. So I get 1 lakh pounds. अब ये 1 लाख पाउंड मैं इस बैंक के पास लेके, 1 pound is equal to 85 rupees. So how many rupees do I get? I get 85 $5 lakh. lakh rupees. Now I go into the market again. $1 is equal to 80 rupees. How many dollars do I get from these 85 lakh rupees? 85 lakh upon 80. How much does this come out to be? $1,06,250. 1,06,250. So I started out with $1 lakh. Now I have 1,06,250. 6,250 is the profit I have made. 1 lakh जो मैंने borrow किया था, I'll repay. 6,250. I may also have to pay some of the interest, probably 1,000 or whatever. So whatever is left is my profit. This is triangular arbitrage, right? So such questions do come where you are given various rates. अभी तक हमने एक ही रेट लिया, bid ask नहीं लिया. यहाँ पे हमारे पास bid भी है, ask भी है. So we have, let's say, USD INR, GBP USD. Do we have GBP INR? We do have GBP INR. तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये दोनों quotations यूज करके GBP INR का quotation निकाल सकती हूँ, correct? Can I use first two quotation to compute GBP INR rate? Yes, no. No. ठीक है, ये करने के बाद आई विल कंपेयर दिस रेट विद द डायरेक्ट रेट बिटवीन जीबीपी INR. ये आया हमारा क्रॉस के थ्रू, क्रॉस रेट के थ्रू, कि भाई अगर मैं यूएसडी से जीबीपी में जाऊं, फिर जीबीपी से, सॉरी क्या है, यूएसडी इज द कॉमन करेंसी ना, तो जीबीपी से यूएसडी में जाऊं और यूएसडी से आईएनआर में जाऊं, तो ये रेट मिलेगा. और अगर मैं जीबीपी से डायरेक्टली आईएनआर में गई तो वो ये रेट रहा. So I can compute the cross rate, compare it with the direct rate and see if the direct rate, जो market में rate, जो direct rate है, वो ज्यादा है या कम है. On the basis of that, I can strategize to make profit. अगर direct rate is more than the cross rate, in that case, the pound is overvalued. And if the direct rate is less than cross rate, in that case, pound is undervalued. Overvalued hai, so we know we have to sell at this rate. Correct? You will be able to attempt questions like these. You've already practiced also in the class. Yeah. Sorry, what did you say? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं. Forward quotations. Forward quotations, the exchange rate quotations in the forward market. In the forward market, 1 month, 3 months, 6 month, year forward market, the currency may be trading at a premium or it may be trading at a discount. A currency being trading at a premium would mean what? For example, in this example, which currency is being traded at discount in the forward market? Question is, looking at these numbers, which currency is trading
at discount in 1 month, 3 month, and 6 month forward market. Dollar. Dollar is trading at discount. वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स ये बता रहा है ये कि भाई स्पॉट मार्केट में तो $1 0.75 पाउंड का है, 1 मंथ फॉरवर्ड मार्केट में $1 0.76 पाउंड का है, 3 मंथ फॉरवर्ड मार्केट में $1 0.79 पाउंड का है। तो डॉलर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है विज़ स्पॉट रेट या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है? डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है फॉरवर्ड मार्केट में या घट रही है? प्रीमियम में ट्रेड कर। Yes, dollar is trading at premium, and if dollar is trading at premium, pound is trading at discount. All right. So, और अगर मुझे निकालना हो कि कितना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं. So, in 1 month forward market, it is trading at a premium of 0.76 minus 0.75 upon 0.75. So, it is always F minus S upon S into 100. फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इनटू 100. 3 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम निकालना है तो 0.79 माइनस स्पॉट मार्केट का रेट विच इज 0.75 अपॉन स्पॉट मार्केट का रेट विच इज 0.75 इनटू 100. So this will give me the rate, the rate of premium at which it is trading, dollar is trading. ठीक है, that's one. मैम Yes. 365 अपॉन डेज को भी मल्टीप्लाई करेंगे? Oh yes, I believe so. एनुअलाइज रेट अगर उसको करना है, एनुअलाइज रेट बनाना है तो करना पड़ेगा. चेक कर लेना, मतलब एक बार जस्ट लुक इनटू योर बुक्स फॉर दैट. बट आई बिलीव हाँ, अगर एनुअलाइज रेट निकालना इट्स गिवन तो ठीक है. फिर तो वो क्या इंटू 365 अपॉन 30 या कैसे गिवन है बुक में? Right. 1 month forward market with 365 upon 30 and then 30. so on. ठीक है, ठीक है. ऑलराइट. तो एनुअलाइज रेट बनाने के लिए कि पर एनम रेट बनाने के लिए वो कर रहे होंगे. ठीक है. So that's one way of forward quotations. Another way the forward rates are quoted are in points. They give you swap points. For example, here. So let's say, let me frame another example. Let's suppose spot market में USD INR is 86.3455. ठीक है, and 65. और 3 month forward market में USD INR is 10 and 15. So सबसे पहले तो स्पॉट मार्केट का बिड कोटेशन हुआ 86.3455 रुपीज पर डॉलर, करेक्ट? और आस्क कोटेशन कितना हुआ? नहीं, नो. ये आपको बिड रेट गिवन है, आस्क रेट भी यही गिवन है.
65.3455. वो तो बिड है, दैट्स बिड। आई एम आस्किंग आस्क। फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रही हूँ अब। इस पर स्पॉट मार्केट में बिड रेट क्या है? 86.3455। आई वांट यू टू फिल दिस वन। 86.3465. हाँ, 86.3465। अभी फॉरवर्ड मार्केट, 3 मंथ फॉरवर्ड मार्केट में यूएसडी आईएनआर, यहाँ पे क्या रेट आएगा? $86.3410. नो, थिंक अगेन। सो दिस हियर इज लास्ट 2 डेसिमल पॉइंट में क्या चेंज होना है, ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, नॉट दी लास्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स। सो फॉरवर्ड मार्केट में रेट बना 86.3465। दिस मीन्स कि 0.0010, क्योंकि ये लास्ट 2 डेसिमल पॉइंट का जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट करता है। सो 0.0010 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और आस्क कोटेशन में 0.0015 ऐड हो जाएगा। सो आस्क कोटेशन क्या बन गई? बताओ। 86.3470. यस, 86.3470। राइट। एडिशन तब होगा जब बिड पॉइंट इज लेस देन आस्क पॉइंट। But agar bid point is more than ask point, in that case, you will be subtracting from your spot quotation. Matlab, let's say this is 15 and this is 10. इस केस में bid point ज्यादा है. See, in no case can a bid quote exceed ask quote. ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि डीलर खरीदेगा महंगे पे और बेचेगा सस्ते में. Bid quotation has to always be less than ask quotation, correct? Yes. तो अगर आपका बिड पॉइंट आस्क पॉइंट से ज्यादा है तो ये जो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिवर्स चेंज है, मतलब वो उतने से माइनस होगा। इसका मतलब है कि डॉलर फॉरवर्ड मार्केट में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब स्पॉट कोटेशन से फॉरवर्ड कोटेशन कम हो जाएगी। तो बिड कोटेशन क्या बन जाएगी फॉरवर्ड मार्केट में, कोई बता सकता है? $86.3440. 86.3440, करेक्ट। माइनस कर दिया, और ये आस्क कोटेशन क्या बन जाएगा? 86.3455. Correct. 86.3455. I think you guys got the gist of it. If there's any doubt here, because this part of what we discussed is foreign exchange market, Unit 2. We'll be moving on to the next segment of Unit 2, which is international parity relationships.
If there's anything you want to ask from the topics that we have covered so far, you can ask. Okay. So shall we take a 5-minute break if that's fine for everybody? Yes, Yes, no? Okay, so it's 1:10. I will restart at 1:20 sharp. एक 10-minute break लेते हैं.
Yes, guys. Um, shall we start? Are you guys here? Ankush, Sanvi. Yes, ma'am. All right. ठीक है. So international parity relationships, we focus on purchasing power parity and interest rate parity, right? Okay, so purchasing power parity, what does it say? बताओ भाई कर चुके हैं हम. Purchasing power parity. Basically, the cost of the goods and services should be same in across nations. When converted in common currency, right? So purchasing power parity says that exchange rate between two currencies should equal to the ratio of price levels of the standard consumption basket in one country to the price of the standard consumption basket in another country. मतलब अगर एक बास्केट लूं जिसमें मैं थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी डाल दूं, फूड डाल दूं, क्लोथ्स डाल दूं, पार्ट ऑफ लैंड डाल दूं, एक बेसिक यूटिलिटी रिक्वायरमेंट्स डाल के, एंड आई measure the price of all of that in US, if let's say that comes out to be $1,000, and in pounds in UK it comes out to be 1,500 pound. In that case, the exchange rate should be £1 is equal to कितना बना कितना डॉलर 10 upon 15, so 2 by 3, which means 1.67. नहीं, Yes. sorry, 0.67 है ना. So this should be the exchange rate between dollar and pound, which also means the same that the price of a standard consumption basket in two countries, when converted into common currency, should be same. Law of one price in international commodity market. कि भाई अगर एक पर्टिकुलर टॉमी की टी शर्ट यहाँ पे 5,000 की मिलती है, 5,000 रुपए की मिलती है, और तो यूएस में आइडियली ये 5,000 अपॉन 85 इतने डॉलर के मिलनी चाहिए. दैट विल मेक द वैल्यू ऑफ दिस टी शर्ट सेम इन इंडिया एंड यूएस when converted either in rupees or in dollar, right? So that is law of one price applied in international commodity market. So it says that the spot rate or exchange rate should be the ratio of the relative price levels in two countries. Now, the thing is that achieving this is impossible because of n number of things, be it tax, be it non-tariff barriers, transportation, policies, even the demand supply conditions in a particular country and in another country. Um, But major frictions will be the taxation, the non-tariff barriers, the transportation, and many a times it is not possible that a particular service is moved to another country just because that service is highly valuable in other country. हमने एक example किया था hair cut का या salon services का, that the salon services earns are highly priced in US, but that would not mean that all the haircutters of India will move to US and settle there. One, it's not possible. Second, the US won't welcome them. So there can be a number of reasons why many goods and services never come into the internet.
national commodity market scope. Be it land, if America has a lot of land and India, its land requirements are very high. We can't move the land of America to India and be able to earn enough on that because the land is highly priced in India, most parts of India, and in most parts of US, land is not that highly valued. So, because land is immovable, so many some factors because of their immovability, some factors because their services cannot be transported to, cannot be separated from the service giver, and those and cannot be transmitted in the international territory, and hence this kind of expectation is not possible. Absolute form of purchasing power parity is not possible. Which form of purchasing power parity is can be expected to uh, can be expected is relative form of purchasing power parity. Relative form of purchasing power parity says that change in exchange rate, not the exchange rate, not the exact exchange rate, but the change in exchange rate should follow the change in the price levels. The change in exchange rate, if E denotes the change in exchange rate and inflation rate denotes the change in price levels, then change in exchange rate between two currencies should be equal to the relative changes in the price levels of the countries, of the respective countries. That is this. This is relative form of purchasing power parity. कि भाई 1 plus E is equal to 1 plus pi dollar upon 1 plus pi pound, where E is the change in exchange rate. Right, इसको हम और simplify करेंगे तो this will become change in exchange rate will be equal to pi dollar minus pi pound upon 1 plus pi pound. Relative form of PPP का final output यही है, final model यही है, that change in exchange rate should be equal to the differential between the inflation levels. मतलब it says कि अगर US का inflation level is say is 4% and India का inflation level year on year inflation level जो है that is say 10%. So the prices of US has gone up by 4% this year, while the prices of India has gone up by 10%. What kind of impact will this have on the international trade in India and US? अगर इंडियन गुड्स के प्राइसेस 10% से ऊपर जाएंगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कम होगा। एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पे या विद यूएस कर ले कि Export भाई बढ़ेगा। इंडिया के हाँ इनके भी गए ऊपर है लेकिन नॉट रिलेटिवली. सो इंडिया का ज्यादा इन्फ्लेशन लेवल है, ज्यादा गुड्स एक्सपेंसिव हो गए हैं. सो यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, विच मीन्स कि डॉलर रुपी में कैसी करेक्शन देख सकते हैं? विल द डॉलर अप्रिशिएट और विल द डॉलर डेप्रिशिएट? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट होगा डॉलर और रुपी डेप्रिशिएट होगा. तो ये क्या कह रहा है? रिलेटिव फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी कह रहा है कि ये तो बात ठीक है कि डॉलर अप्रिशिएट होगा और रुपी डेप्रिशिएट होगा, लेकिन कितने से? इट इज सेइंग दैट इट शुड रेजोनेट विद द relative difference between the inflation level in two countries. कि भाई डॉलर का था 4%, रुपी का है 10%.
तो पाई डॉलर माइनस पाई रुपी, ये तब आया जब हमने ऊपर डॉलर रखा, नीचे रुपी रखा। So this comes out to be 4% minus 10% upon 1 plus 10%, मतलब minus 6% upon 1.1, मतलब 1 plus 0.1 is 1.1. So minus 0.06 upon 1.1. Whatever this comes out to be, this will be nearby 5% या जो भी आप चेक करोगे तो। So इतने से रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा और डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा। अगर माइनस में आया है, सो वी जो जिसका इन्फ्लेशन लेवल ज्यादा है वो उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिसका इन्फ्लेशन लेवल कम है उसकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। क्योंकि ये माइनस में आया है तो दैट मीन्स दिस इज मेंट फॉर डेप्रिशिएटिंग करेंसी एंड वी नो दैट डेप्रिशिएटिंग करेंसी इन दिस केस इज रुपीज, right? So this is how we can find out the expected change in exchange rate using purchasing power parity. So purchasing power parity is meant to help us predict the expected change in exchange rate. So we all know the direction in which it will go. If the inflation levels is very high in one particular country, its currency is bound to depreciate. But the magnitude with which it will depreciate is equal to the inflation level difference. भाई अगर आपको अपनी करेंसी कितने से डेप्रिशिएट हुई ये देखना है, सो अपनी करेंसी को हम यहाँ पे रखेंगे पाई जे माइनस पाई के 1 प्लस पाई के। एक ही बात है, यू कैन फिगर इट आउट। अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो इट इज मेंट फॉर अप्रिशिएटिंग करेंसी, उतने से अप्रिशिएट हो रहा है। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो इट इज मेंट फॉर डेप्रिशिएटिंग करेंसी कि उतने से वो डेप्रिशिएट होगी। आई होप दिस मेक सेंस टू यू, Yes. है ना? तो ये हमने किया था कि 1 प्लस ई शुड इक्वल टू 1 प्लस पाई अपॉन पाई के पाई जे। So if this is followed, that means the change in exchange rate is exactly equal to what is predicted by purchasing power parity. If the actual change in exchange rate is equal to what is predicted by purchasing power parity, in that case, there is no real change in competitiveness of the country. Ma'am, Hmm. ma'am, somebody is waiting in the lobby. No real change in competitiveness of the country. बिकॉज जितने से प्राइजेस महंगे हुए उतने से करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, विच विल नॉट हिंडर द ट्रेड बैलेंस ऑफ द कंपनी। अब ट्रेड चेंज नहीं होगा क्योंकि प्राइजेस बढ़े तो इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट कम हुआ, लेकिन क्योंकि अब करेंसी सस्ती हो गई, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, सो वॉट एवर चेंज हैज हैपेंड विल नाउ रिवर्स एंड there won't be a real change in competitiveness. तो अगर मैं ये 1 प्लस जो हमारा relative version of PPP था, 1 plus E on 1 plus pi K upon 1 plus pi J in one currency and another currency. Hello. Yes.
Okay, guys, I'm back. I'm so sorry. I was called by the office. I had to go. I'm audible? Yes, ma'am. ठीक है जी. तो all I was saying is कि अगर ये parity maintain होती है, अगर change in exchange rate exactly equals to the relative ratio change in the inflation levels of the country, then uh, there will be no real change in exchange rate. मतलब अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा? 1 plus pi k upon 1 plus e into 1 plus pi j. अगर तो ये 1 ही है, मतलब this equation holds true. अगर तो ये 1 ही है, then there is no real change in the international trade competitiveness. But if it is more than 1 or less than 1, in that case, there will be some real changes in trade balances. इसका मतलब ये है कि अगर यूएस का इन्फ्लेशन 4% है, इंडिया का इन्फ्लेशन 10% है, और मेरा परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिडिक्ट करता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी ये प्रिडिक्ट करता है कि जो डॉलर है इट शुड एप्रिशिएट बाय 5.5% and rupee should depreciate by this value 5%. लेट्स सपोज अगर मैं ये हाइपोथेटिकली ये नंबर्स डालूं और ये वैल्यू आए कि भाई डॉलर इतने से अप्रिशिएट करना चाहिए और रुपी इतने से डेप्रिशिएट करना चाहिए. If that is if the actual change in dollar is not 5%, let's say actual change in dollar is 4%, मतलब जो E है वो 5% नहीं है एक्चुअल चेंज, वो उससे कम है. उस केस में Q will be more than 1. और अगर E is say more than 5%, in that case Q जो आएगा वो आपका less than 1 आएगा. इसका मतलब ये है कि भाई होना था 5% से अप्रिशिएट, लेकिन अगर ज्यादा से अप्रिशिएट हो गया तो दैट वुड लीड टू कि प्राइस लेवल्स तो 4% से ही बढ़े, लेकिन करेंसी 7% से बढ़ गई. तो मतलब ज्यादा अप्रिशिएट हो गई, विच मीन्स कि यूएस के गुड्स रिलेटिवली अब महंगे हो गए. यहाँ पे क्या हुआ इंडिया में? 10% से प्राइस लेवल्स बढ़े, करेंसी 7% से गिर गई. राइट, तो इंडिया के गुड्स चीप हो गए, विच मीन्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड. अगर ऐसा होता कि भाई 4% से ही बढ़ते, ऐसा होता कि 6% का ही डिफरेंस आता, 6% से डॉलर अप्रिशिएट होता, 6% से रुपी डेप्रिशिएट होता, इन दैट केस द बैलेंसेस वुड हैव ऑफसेट and no real change in trade would have happened. ठीक है, so this is purchasing power parity that help us predict the changes in exchange rate levels based on the changes in inflation levels vis-a-vis two countries. Any doubts in purchasing power parity? Ma'am, Hmm. could you please explain that Q वाला दोबारा से, जो कि हमने 1 plus pi k वाला किया था? So do you understand this equation? Yes. Right, this is PPP in this is PPP की equation. अगर ये if it holds true, then Q will be 1. That means Q क्या है? Q is equal to, बस इसको मैं नीचे ले आई,
होल्डिंग ट्रू का मतलब ये है कि दैट एक्चुअल चेंज इन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू जो भी इससे आता है। अगर एक्चुअल चेंज इन एक्सचेंज रेट मतलब 1+e अगर इसके इक्वल हो गया तो दैट मीन्स द रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीपी इज होल्डिंग ट्रू। एंड इफ दैट्स द केस, और अगर मुझे पता है कि q इज इक्वल टू दिस, तो q की वैल्यू 1 आएगी। इज दैट राइट? Yes. मतलब let's just take a numerical example. Let's say kth करेंसी का 10% ले रही हूँ मैं, jth करेंसी का 4% ले रही हूँ। Let's compute this. 1.1 upon 1.04 कितना आता है? $1.057. इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? So 1.1 upon 1.04 आता है 1.057। ये आया आपका 1+e। इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। e आ गया 1.057 minus 1 which is 0.057. Give me the interpretation. उन्हें पता है मेरी क्लास चल रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी जाना है। या मेरी तो क्लास चल रही है। उनको मत बोलो, मतलब आप देख लो, अगर वैसे तनुषा भी काम ही कर रही होगी, अगर आपको बोलना तो चली जाओ। अच्छा, हाँ हाँ, तो बोल दो आप ही जा रहे हो अभी तो। क्यों नहीं? तो 3 बजे तक मेरी क्लास है, ठीक है? उसके बाद अगर आप पूछो कब चाहिए। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस। यस, इंटरप्रिटेशन दो भाई इसकी। Jth करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएटेड है। jth करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होनी चाहिए कितने परसेंट से? 0.057. 5.7% से, करेक्ट? Yes. तो jth करेंसी शुड अप्रिशिएट बाय 5.7%। तो यहां तक तो समझ आ गया। तो नाउ लेट्स से दिस jth करेंसी अप्रिशिएट्स बाय 5.7%। ये तो है प्रिडिक्शन, ये है एक्चुअलिटी कि भाई जेएथ करेंसी ने एक्चुअली में 5.7% से अप्रिशिएट किया। यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्यू? Yes. क्या आएगा? It does. हाँ सानवी, कितना आएगा? Is it 1.05? यस, विच इज 1 ओनली, राइट? ये देखना 1+π/1+πj हमें पता है कितना होता है, 1.057 होता है कि नहीं? Yes. ई तेरे को पता है कि 0.057 है, तो अगर ये चीज 1.057 है और ई हमें पता है कि जे हैज अप्रिशिएटेड बाय, सो चेंज इन एक्सचेंज रेट इज 5.7% ओनली, तो 1+e हो गया 1.057 ओनली, तो ये 1 के आसपास ही आया, राइट? Yes. तो अगर Q
तो यहाँ पे इस केस में Q1 है। क्यों Q1 है? क्योंकि एक्चुअल चेंज इज इक्वल टू द प्रिडिक्टेड चेंज। प्रिडिक्टेड चेंज भी इतना ही था और जो एक्चुअल चेंज हुआ वो भी इतना हुआ। सो व्हाट वाज द केस वाज कि हमने प्रिडिक्ट किया कि जेएथ करेंसी 5.7% से अप्रिशिएट होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो गुड्स हैं वो सिर्फ 4% से महंगे हुए हैं। ठीक है। और केएफ करेंसी 5.7% से डेप्रिशिएट होनी चाहिए, क्योंकि उसके गुड्स जो हैं वो 6% से इंक्रीज हुआ। 11% से इन्फ्लेशन लेवल 11 था ना, 11 लिया था ना हमने केएफ का, है ना। जे 4% लिया था, के 11 लिया था। तो अब हम देखें तो इसका भी 11 पॉइंट ओवरऑल तो दोनों में जो डिफरेंस था वो कितने का था? मोटा मोटा 6% का था कि केएफ कंट्री में जो है गुड 6% ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो उस महंगे गुड को काउंटर करने के लिए उसकी करेंसी लगभग लगभग 6% से अगर डेप्रिशिएट कर जाए, इसकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो नेचुरल सी बात है कि दूसरी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। तो अगर लगभग लगभग उतने से ही डेप्रिशिएट कर जाए तो जो नेट इफेक्ट होगा वो सेम होगा दोनों कंट्री में। दोनों कंट्री में जो प्राइस ऑफ गुड्स एक दूसरी कंट्री के सिटीजन को पड़ेगा वो पड़ेगा, राइट। अगर लेट्स सपोज 1000 रुपए का गुड था, जेएथ कंट्री में तो वो हो गया 1040 का या 1004 का, और केएथ कंट्री में वो हो गया 1011 का, करेक्ट। यस। लेकिन अगर इसकी करेंसी 6% से या जो भी 1% से डेप्रिशिएट कर जाएगी, लेट्स सपोज से रेट भी ले लेते हैं कि $1 इक्वल टू 1 रुपी, वही वैसे ले लेते हैं, जिस केस में डॉलर हमारी जेएथ करेंसी है और रुपी हमारी केएथ करेंसी है। तो अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाए, रुपी डेप्रिशिएट कर जाए मतलब $1 इक्वल टू 1 रुपी की जगह इस केस में मेरे को पड़ रहा है $1004 या 1004 रुपीज, और यहाँ पे इंडिया में पड़ रहा है $1011 या 1011 रुपी का जो भी ये गुड है। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा कितने से? 5.7%, या मोटा मोटा 6% ही लगा ले, तो ये हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 1.0 0 1 का 6% क्या हुआ? अगर $1 1 रुपी है पहले, 00 आएगा कि 000 आएगा? 00। 00। तो इस केस में क्या हुआ? डॉलर अप्रिशिएट कर गया, रुपी डेप्रिशिएट कर गया। अगर मैं डॉलर में निकालूं तो ये गुड मेरे को पड़ रहा है $1004 का, और ये गुड मेरे को अब कितने का पड़ेगा? दिस इज इन रुपीज, 1011 रुपीज है, तो रुपी को डॉलर में कैसे करेंगे? Ma'am, shouldn't it be 1.06 only? अगर 1 सेकेंड, 1 का 6%, 0.06, ठीक है चलो 1.06। 60% ऑफ वैल्यू क्यों लग रही है? वो 6% ऑफ वैल्यू नहीं लग रही।
1 का 60% कितना हुआ? देख, 1 का 60% हुआ 0.06, तो 1 का 6% कितना हुआ? अच्छा 0.6 हुआ, ठीक है ठीक है, 0.6 हुआ ना, ठीक है ठीक है ठीक है, यू आर राइट, ये होना चाहिए, 1.06 रुपये पर डॉलर होना चाहिए। तो अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करो। अगर 1011 रुपीज का सामान हो गया, लेकिन डॉलर में कन्वर्ट करूं तो मुझे कितने डॉलर का सामान पड़ेगा ये? $1 इज इक्वल टू 1.06 रुपीज। सो दिस अपॉन 1.06 हुआ, Yes. कितना आया? ये तो बहुत कम हो गया। 0.11 divided by 1 point, 95.03. नहीं तो काफी कम हो गया, क्योंकि हमने 1 प्लस पाई के अपॉन 1 प्लस पाई जे, ठीक है, के है हमारा के है 11%, 1.11 या 1.04, 1.11 upon 1.04, 1.067, तो 6.7% फिर जेथ करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए, और ये डिप्रिशिएट होना चाहिए। डबल 06 होना चाहिए मेरे को लग रहा है, तब हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। कितना आया था हमारा ये? 1 प्लस ई 1 प्लस पाई के अपॉन 1 प्लस पाई जे, दिस इज 1 पॉइंट 1.067. मैम हमारा पहले 1.057 था। के क्या था? पाई के 11 ही लिया ना हमने। मैम शायद हमने कुछ डिफरेंट लिया था। अभी 11 और 4 करके देखो, ये आ रहा है। यस। सो ये आया, ई शुड बी पॉइंट 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.067, मतलब ई इज इक्वल टू 6.7% of
So point here is कि if the predicted change reflects in real, अगर जो हमारा ये आया है 6.7%, that is the actual exchange rate also, Q आ जाएगा 1, और उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, Q वो तो आ गया था हमारा 1, उस केस में शायद हमने नंबर्स कुछ और लिए थे इसलिए हमारा 5.7 आया था. Am I audible? Yes, ma'am. So Q equivalent to 1 means that the purchasing by parity has held true and there is no real change in trade. No real change in trade हम prove करने की कोशिश कर रहे थे, and for some reason यहाँ पे I don't know, maybe some play of numbers here, but it means कि जितना there is no change in the purchasing power of either of the citizen of the country, because what has happened is कि जिस country में goods का price बढ़ा है उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर गई है, तो दूसरे सिटीजन के लिए उतने का ही पड़ा जितने का उसको अपने वहां मिल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई Q इक्विवेलेंट टू 1 का मतलब है कि इन्फ्लेशन लेवल, इन्फ्लेशन डिफरेंस जो है, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो है दोनों कंट्रीज के बीच का, दैट हैज बीन टेकन केयर बाय the exchange rate change of the currencies, and hence there is no real change in the purchasing power of either of the citizens of the country. तो ये हमें कोई न्यूमेरिकली सॉल्व करने को नहीं आता है. We just have to understand the concept behind it, that if it holds true, relative version of PVP holds true, Q will be 1, and Q being 1 means that there is no real change in the purchasing power of the countries, of the citizens of the country. मतलब कि आपका जो ट्रेड बैलेंस था वो सेम ही रहेगा. ठीक है? Yes. Okay, now let's move to interest rate parity. और ये हमने आई थिंक पहले भी Q पे इस क्लास में we must have done some example and validated if it holds true and all. तो otherwise भी अगर रिविजन की बात है तो रिमेम्बर न्यूमेरिकली अप्लाई करने को ये आता है. Coming to interest rate parity, okay, we just have 1 hour and we have a lot to cover. So, okay, interest rate parity करते हैं. चलो, interest rate parity बताओ क्या होता है? Law of one price in international money market. What does that mean? मतलब कि अगर एक कंट्री में मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो जो रिटर्न मुझे उस कंट्री में मिलता है, it should match with the return I can yield in my country also. So it says that I should be indifferent in investing across countries. If there is no indifference, मतलब अगर ऐसा है कि किसी कंट्री में तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है 1 साल के इन्वेस्टमेंट पे और दूसरी कंट्री में नहीं मिल रहा है, तो एवरीबडी वुड गो एंड इन्वेस्ट इन दैट कंट्री, राइट? सो इसकी डेरिवेशन कैसे होती है कि लेट्स सपोज आई हैव 1 रुपीज, आई हैव 2 एवेन्यूज. या तो मैं इस पैसे को अपने यही इन्वेस्ट कर सकती हूँ एंड आई कैन मेक 1+I interest rate, whatever rate is applicable in rupee denominated securities, on rupee denominated securities, or I can invest it in US or any other country. Let's suppose US. तो 1 rupee को मैं as is तो invest नहीं करूंगी. I'll have to, what will I need to do?
एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस में. एक second. So we have 1 rupee. Either I can invest here or I can exchange it, convert it into dollars. तो spot market में जाऊंगी, डॉलर में convert करूंगी. So if let's say spot rate is rupee value of dollar, I know that 1 rupee is equal, $1 is equal to 80 rupees. Spot rate क्या है? Rupee value of dollar है. तो if let's suppose I have 1 lakh, तो 1 लाख रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करूंगी या फिर मल्टीप्लाई 80 से. मल्टीप्लाई है, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है ना. $1 is equal to 80 rupees. डिवाइड. So 1 lakh upon S will give me dollars. Those dollars can get invested in dollar denominated security and earn a return equivalent to whatever return is applicable on those securities. Right? तो लेकिन अभी भी this is what I get in terms of rupees. But this is what I get is in terms of dollar. ये अब डॉलर है, ये अभी रुपी है. They're not same. So I'll have to convert this dollar proceeds into rupees again. Correct? And how can I convert it in rupees? This is what I get after 1 year. मैं 1 साल डॉलर में इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि 1 साल बाद ये डॉलर्स मेरे पास I will be receiving. So I'll have to again convert these dollars into rupees. तो फॉरवर्ड रेट के हिसाब से मैं निकाल सकती हूँ कि मुझे 1 साल बाद इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना मिलेगा. यस मैम. तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी फॉरवर्ड रेट से या डिवाइड. मल्टीप्लाई. अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम डॉलर टू रुपीज अगेन. डॉलर टू रुपीज. हाँ. So into F. So interest rate parity says that this should be equal. The rupee proceeds after 1 year that I make by investing in India and the rupee proceeds after 1 year that I make after investing in US. ये इक्वल होना चाहिए. ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलता है, लॉ ऑफ वन प्राइस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, कि भाई जो रिटर्न यील्ड कर रही हूं मैं 1 साल बाद, that is similar in both the markets. If that would not be the case, everybody will borrow in one market, invest in another market. So interest rate parity क्या बन गई? 1 plus I rupee. इस 1 लाख को मैं 1 ही ले रही हूँ, ये मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए 1 लाख कर दिया था. So 1 plus I rupee should equal to 1 by S. 1 by S into 1 plus I dollar into F, which means what? 1 plus I rupee is equal to F by S, 1 plus I dollar. Right, so this is interest rate parity equation. इन्होंने थोड़ा सा इसको और simplify कर दिया है. But we can just keep on remembering this. इसमें हम कैसे देख रहे थे? रुपी वैल्यू ऑफ डॉलर. सो यूएसडी आईएनआर ऐसे चल रहा था. रुपी वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, विच मीन्स अगर मेरे को इसको जनरलाइज करना हो तो जे के टर्म में करना हो तो रुपी है मेरा केएच और डॉलर है मेरा जेएच. सो 1 plus IK should equal to F by S 1 plus IJ as per interest rate parity. Whatever I make in JH currency after 1 year by investing in JH currency denominated security should equal to what I make in KH currency. Right? So इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आ जाता है कि फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट में क्या रिलेशनशिप है.
I can write this equation as this also, correct? Yes, ma'am. और अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 1+ik/1+ij can be written as this. yes, यहां तक तो कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने. Yes. दोनों जगह -1 कर दूं तो क्या बन गया फाइनली? ये बन गया 1+ik -1 - so ik -ij upon 1+ij is equal to f minus s upon s. ये समझ आ रहा है? So Yes. these are different variants of IRP only. ये इक्वेशन भी वही बात कह रही है, ये इक्वेशन भी वही बात कह रही है, ये इक्वेशन भी वही बात कह रही है. ये कह रही है कि भाई जो फॉरवर्ड और स्पॉट रेट में डिफरेंस है ना, या अगर मैं एक तरीके से देखूं तो ये फॉर्मूला बन गया आपका करेंसी प्रीमियम या डिस्काउंट पे चल रही है, कितने प्रीमियम या डिस्काउंट पे चल रही है फॉरवर्ड मार्केट में, ये उसी का ही फॉर्मूला है. F माइनस एस अपॉन एस याद आया कि फॉरवर्ड प्रीमियम निकालते हैं हम ऐसे या फॉरवर्ड डिस्काउंट निकालते हैं हम ऐसे, Yes. है ना? तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोल रहा है कि भाई जो डिफरेंस चल रहा है फॉरवर्ड और स्पॉट का, या फॉरवर्ड मार्केट में जो करेंसी ट्रेड कर रही है वो उसका वो कितने प्रीमियम पे करेगी या डिस्काउंट पे करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स बिटवीन टू करेंसी. भाई अगर कोई करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन? एवरीबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट देयर. Yes. लेट्स से आपका जेथ का इंटरेस्ट रेट 4 है और केथ का इंटरेस्ट रेट 10 है, तो हर कोई क्या करेगा? हर कोई बोरो जे करेंसी, Invest KF currency. बोरो करने के बाद उसको जे करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट जे इनटू के. स्पॉट मार्केट में हर कोई क्या कर रहा है? के को बाय कर रहा है और जे को सेल कर रहा है, करेक्ट? यस नो? Yes. नेक्स्ट क्या करेगा वो? इन्वेस्ट के KF करेंसी. currency. और फोर्थ क्या करेगा वो? Sell. सेल KF. के इंटू जे. मतलब फॉरवर्ड मार्केट में हर कोई के सेल कर रहा है और जे बाय कर रहा है. यस? Yes, ma'am. सो दिस हैपेंस. तो इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो शॉर्ट रन में तो उसकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, लेकिन लॉन्ग रन में फॉरवर्ड मार्केट में इट इज एक्सपेक्टेड इट्स करेंसी टू डेप्रिशिएट. और पैरिटी तभी होल्ड करेगी अगर उसकी करेंसी फॉरवर्ड मार्केट में डेप्रिशिएट होएगी ही नहीं. तो ये तो विन विन सिचुएशन है, हर कोई जे में करता रहेगा बोरो और वहां पे सेल करता रहेगा. लेकिन क्योंकि ये मैकेनिज्म होगा, क्योंकि हर कोई जे बोरो करेगा, फिर जे से के में कन्वर्ट कराएगा, फिर के में इन्वेस्ट करेगा और फिर के से जे में कन्वर्ट कराएगा, सिंस एवरीबडी विल स्टार्ट डूइंग इट, इट इज बाउंड टू डेप्रिशिएट इन द लॉन्ग रन. दैट्स व्हाट इंटरेस्ट रेट पैरिटी सेज. ठीक है? Yes. So change in exchange rate is also dependent upon the change in interest rate levels. F minus S upon S is equal to IK minus IJ upon 1 plus IK. कुछ ऐसा ही हमने अभी बनाई थी इक्वेशन. तो जो भी है, so this is interest rate parity. Uncovered छोड़ो, not important.
Look at this question and tell me if you'll be able to solve this question. Yes, ma'am. ठीक है. Now let's move to unit 3. Exchange rate exposure. How fluctuation in exchange rate affect the traders, affect the companies, and how they can manage that is what is being talked about in this unit. We have 3 kinds of exposure to discuss here: transaction, translation, and economic. Let's try to wind these 3 exposures in next 10-15 minutes so that we can spend some time on the last unit. Although last unit तो recently किया था, but ठीक है, चलो. Starting with transaction exposure, what kind of exposure is that? बेसिकली शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, कैश इनकर्स को मैनेज करते हैं. Short term cash flow को manage करते हैं. So if there are contractual commitments, short term भी हो सकता है, long term भी हो सकता है. It can exceed a year also. But if there are contractual commitments that are denominated in foreign currency, मतलब आपके inflow है या outflow है in future contractual commitments denominated in foreign currency. So that inflow or outflow is denominated in foreign currency. मतलब कि if there is a payable in dollars in 3 months, payable in euros in 3 months, for an Indian trader, he is exposed to the dollar price, dollar rate movement, और जिस भी करेंसी में उसकी पेबल या रिसीवेबल डिनोमिनेटेड है, he is exposed to the movement in the currency value, right? मैनेज कैसे करते हैं इसको? We have 3 markets to manage, yes? Yes, ma'am. We have forward market, option market, and money market. तो फॉरवर्ड मार्केट में लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट कि $1,00,000 का अगर रिसीवेबल है, सो फॉरवर्ड मार्केट में कैसी पोजीशन ले सकते हैं? लॉन्ग कर सकते हैं. लॉन्ग करेंगे, इज दैट, थिंक इट थ्रू. द ट्रेडर नोज कि उसके पास 3 महीने बाद $1,00,000 आ जाएगा. He will have to, what will he have to do? उस $1,00,000 को से, being an Indian trader, he'll have to रिसीवेबल है ना, तो $1,00,000 आएगा, $1,00,000 को तो बेचना पड़ेगा ना, तो विल हैव टू, राइट. तो इसको शॉर्ट फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर्स, फॉरवर्ड मार्केट में जाके डॉलर्स को शॉर्ट कर देगा. ऑप्शन मार्केट में क्या पोजीशन ले सकते हैं? रिसीवेबल्स है, हमें आने वाले हैं वो पेमेंट. करेक्ट. यू आर एन इंडियन ट्रेडर, राइट? की बात करते हैं तो हम लॉन्ग करते हैं ना. किसकी बात करते हैं? जब हम पेमेंट की बात करते हैं तब तो हम लॉन्ग करेंगे. तो अब जब रिसीव कर रहे हैं, जब हमें पे करना होता है, 3 महीने बाद अगर मेरे को $1,00,000 पे करना था, तो मैं बैंक को बोलूंगी कि मुझे इस रेट के हिसाब से 3 महीने बाद इतने डॉलर चाहिए, ताकि मैं अपनी पेमेंट कर पाऊं. यस. यस. अब अगर मेरे पास 3 महीने बाद रिसीवेबल है $1,00,000 का, मतलब मेरे हाथ में $1,00,000 आ जाएगा,
बीइंग एन इंडियन ट्रेडर, डॉलर तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है नहीं, तो मुझे डॉलर बेच के रुपी मिलेगा, करेक्ट? यस। तो डॉलर को तो बेचना पड़ेगा, या तो मैं अभी कोई पोजीशन ना लूं, अनहेज्ड रहूं और डॉलर को 3 महीने बाद जब आए तब बेचूं। पर अगर मेरे को लगता है कि डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है 3 महीने बाद, तो मैं आज ही बैंक के साथ जाके फिक्स कर दूंगी कि मुझे इस रेट के हिसाब से $1,00,000 3 महीने बाद आपको सेल करने हैं। तो पोजीशन तो शॉर्ट की लूंगी ना अगर हेजिंग करनी है तो। आई विल बी सेलिंग डॉलर्स। ऑप्शन मार्केट में क्या पोजीशन लूंगी? लॉन्ग कॉल या लॉन्ग शॉर्ट कॉल? लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट? लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट, ठीक है जी। और मनी मार्केट, एक बार मनी मार्केट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास रिसीवेबल है तो व्हाट डू आई डू? मनी मार्केट में कैसी पोजीशन लेनी पड़ती है? बताओ, करा हुआ है हमने पूरा प्रोसेस। लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी। करेक्ट, लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी, किसमें? डॉलर्स में। यस। मतलब मुझे लायबिलिटी क्रिएट करनी है, मतलब मुझे बोरो करना होगा। कितने डॉलर्स बोरो करने होंगे कि 1 साल बाद अगर मेरा ये रिसीवेबल है तो इतने का ही पेबल हो, करेक्ट? सो $1,00,000 का 1 साल बाद रिसीवेबल है, तो मैं लायबिलिटी क्रिएट करूंगी कि इतने की ही पेमेंट कर रही हूं मैं। तो इतने की पेमेंट मैं तब कर रही होंगी जब मैं, अगर लेट्स से वहां 10% का रेट है, तो मैं 91 समथिंग खरीदूंगी डॉलर, बोरो करूंगी डॉलर, एंड आई विल बोरो इट एट 10%। तो 1 साल 10। बाद मेरे पास 1 लाख का पेबल बन जाएगा, है ना? यस। तो जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है मेरा यूएस में, उस हिसाब से आई विल फिगर आउट कि मुझे आज कितने की कितना बोरो करना है। फिर बोरो करके मेरे पास डॉलर्स आ जाएंगे, उस डॉलर को मैं कन्वर्ट कराऊंगी रुपी में, और उस रुपी को मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। इन्वेस्ट। तो जो भी मेरी वन। इन्वेस्टेड प्रोसीड्स हैं, दैट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ रिसीवेबल दैट आई नो टुडे। आज ही पता लग गया कि भाई 1 साल बाद इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेरे को ये मिल रहा होगा। यस, क्योंकि जो यस। रिसीवेबल आएगा वो उससे तो मैं अपनी ये वाली लायबिलिटी फुलफिल कर दूंगी। सो ये मनी मार्केट है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेट्स मूव टू ट्रांसलेशन एक्सपोजर नाउ। ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है? बैलेंस शीट फॉरेन सब्सिडरी की हम हम्म, ट्रांसलेट करते हैं कंट्री पेरेंट कंट्री की करेंसीज में, और उसमें जो रिस्क एसोसिएट होता है उससे मैनेज करते हैं। Translation exposure is meant for MNCs, that is meant for MNCs where the subsidiaries are located at different countries and their financial statements are denominated in different currency. कि भाई एक की so parent is an American company, parent is registered in America, but it has a rupee say subsidiary in India, a subsidiary in Japan, और इंडियन सब्सिडरी का रुपी में डिनोमिनेशन है, जापान का येन में डिनोमिनेशन है। तो जब उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं ईयर एंड पे, तो उसको रुपी वाली डिनोमिनेशन को या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डॉलर में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, येन वाले को भी डॉलर में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर वो इन तीनों को हॉरिजॉन्टली सम अप करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, करेक्ट? यही होता है। यस। सो नाउ
The point is there are various line items in these financial statements. Some of those transactions have happened in the recent past. Some of the transactions have happened long back. Some of the transactions have happened throughout the last period. What rate to use for translation is the question here. Correct? कि भाई हम spot rate लें, हम historical rate लें, किस line item को किस rate पे translate करें, that's the question. So there are certain methods out there. There are certain guidelines that help these MNCs navigate which rate to take for which line item. So I've already, I think, mentioned that current rate method is the most recent method that is being applied and followed in conjunction with temporal. These two methods have not been in use in recent past or anymore. Current non-current method is a very old method, but still let's very quickly brush up on all these four methods. अपना करंट नॉन करंट मेथड में क्या है बता चुकी हूँ मैं, तुम लोग बताओगे फटाफट इनके रूल्स डिवाइस करते हैं, देन वी मूव अहेड. Do we remember current non-current method? मैम करंट एसेट और लाइबिलिटीज को स्पॉट रेट, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज को हिस्टोरिकल रेट एंड इनकम लाइन आइटम्स को एवरेज रेट. Correct. And one more addition, the line items in income statement that are linked to the non-current assets, for example, depreciation, will get translated at Historical rate. historical rate. That's just one more rider to this method, otherwise correct. Monetary, non-monetary? Monetary items current rate or spot Correct. rate, non-monetary historical. Correct. Income statement, average exchange rate. Average. Two riders. Depreciation again historical because it belongs to non-monetary account line item, correct? And COGS. COGS, cost of goods sold, because inventory, it is linked to inventory, and inventory is considered as a non-monetary account line item. मॉनिटरी में हमारे सारे पेबल्स आते हैं, रिसीवेबल्स आते हैं, सारा डेट आता है, because it reflects, it represents a fixed sum of money to be paid, right? So receivables, payables, long-term debt, your cash and cash equivalents, all of that. Coming to temporal और monetary non-monetary में क्या difference है? रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको स्पॉट रेट पे ट्रांसलेट करते हैं. तो इफ एट ऑल किसी भी, देखो मॉनेटरी तो करंट रेट पे ही रहेगा, नॉन मॉनेटरी हिस्टोरिकल रेट पे ही रहेगा, इनकम स्टेटमेंट एवरेज एक्सचेंज रेट पे ही रहेगा सेम. बट अगर कोई नॉन मॉनेटरी अकाउंट लाइन आइटम का रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है तो वो फिर मॉनेटरी की तरह ट्रीट होगा. ठीक है, तो उस केस में उसका जो है स्पॉट रेट करंट रेट के हिसाब से ट्रांसलेशन होगा. करेक्ट. और depreciation and cost of goods sold. Depreciation is linked to fixed asset. Fixed asset का realizable value given है, और अगर given है और we are treating it as monetary account line item, in that case depreciation को भी average exchange rate से करेंगे. If not, then historical rate only. Cost of goods sold is linked to inventory. Again, if inventory का realizable value given है and we are treating it like monetary account line item, in that case we use average exchange rate to translate it, otherwise historical rate.
So everything is same as we did in monetary, non-monetary method. The only difference is if there is any line item that belongs to non-monetary account but is being treated as monetary account because its realizable value is given, then we translate that at spot rate and income statement items at average exchange rate only. कोई इसमें डाउट है? No, ma'am. Current rate method, everything at current rate, right? Except for Equity. equity. और इसमें what do we open? Cumulative translation adjustment. CTA is opened in the balance sheet. ठीक है. So that was your translation exposure and how we deal with translation exposure. Usually there's a question where you are given income statement, balance sheet are required to translate on the given methods. You have to conduct the translation. ठीक है. Income statement, balance sheet दोनों ही बनाना है. Coming to economic exposure. So this was one of the theory topics that we didn't do before, I believe. So like in transaction exposure, we look at the impact of exchange rate fluctuations on the short-term future commitments. Economic exposure is a long-run impact on my company's cash flows due to exchange rate fluctuations. So it can impact my net worth, it can impact my earnings, it can impact my market value. So transaction exposure is limited to one contract, to the existing contracts. Economic exposure expands itself to all upcoming contracts I can have or to all upcoming transactions I may have which is denominated in foreign currency. So कोई करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट होता जा रहा है and I'm invested into that country, that can hamper my cash flow position, that can hamper my net worth also, my company's net worth also. So company की जो वैल्यू निकलती है, usually the value of a company अगर DCF method देखते हैं तो it is the present value of all its expected cash flows. If I am making more inflows in a particular currency and its value keeps depreciating, then in my home currency terms, the present value of all the expected cash flows will decline. अगर मैं किसी करेंसी में heavily invested हूँ, मतलब इस country में invested हूँ, if let's say an American parent has a subsidiary in India and subsidiary in India is not manufacturing facility, is not just a manufacturing facility. India is a major market to that subsidiary. मतलब वो इंडिया में सेल करते हैं, they're making money in India by selling to the Indian market, making money in rupees, right? तो लेकिन अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और होता जाएगा, it is expected to depreciate in future, तो जो भी मैं कैश फ्लोज इस सब्सिडरी से बना रही हूँ उसकी आज की वैल्यू तो कम होगी क्योंकि उसकी फ्यूचर वैल्यू भी कम होगी when translated into dollars, right? So economic exposure is a long-term impact of unexpected changes of exchange rate or exchange rate fluctuations on the company's value, on the company's assets, liabilities. It's taken all together. अगर सिर्फ कैश फ्लोज की बात करें वी कॉल इट ऑपरेटिंग एक्सपोजर, बट जब हम कैश फ्लोज के साथ कंपनी की नेटवर्थ की भी बात करते हैं, कंपनी के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो देन इकोनॉमिक एक्सपोजर is the umbrella term that is used to define that how currency fluctuations can change my net worth, can change my company's cash flows. So how sensitive is my company's valuation to a particular currency's fluctuations? That's what economic exposure is. And of course, there's no single way to mitigate it. It's not a particular contract that needs to be managed. It's the way the company is operating. उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अपने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, अपने ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज सब में चेंजेस करने पड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द एक्सचेंज रेट्स में प्ले आउट इन द मार्केट.
राइट. सो डिड वी अंडरस्टैंड द ब्रॉड कॉन्सेप्ट? हमें थियोरेटिकली ही करना है ये. Although the sensitivity of the assets value, sensitivity of liabilities values, sensitivity of companies' expected cash flows to the foreign exchange rate fluctuations can be measured using regression methodology. हम regression लगा के निकाल सकते हैं कि कितना sensitive है, but we numerically we do not need to understand how that's done, but we can use regression equations to solve that out for us. कि कितना sensitive है my company's value to the exchange rate fluctuations. That's what economic exposure is. Okay. यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. So, ma'am, इसमें numerical questions we should not expect? No. Okay. So how do we manage this exposure? As I said, there is no one single way of managing it. It is a macro level of exposure for the company. But there are ways we can reduce the dependency on one currency by diversifying our marketing strategies, diversifying our procurement strategies, by finding more markets to sell my product in. So market diversification या sourcing, जो आपके vendors हैं जहां से आप source कर रहे हो, you can diversify their them the procurement के लिए भी diversification कर सकते हो. Product differentiation इसका right. And we should also select low cost production sites, low cost जो भी procurement भी हम कर रहे हैं अगर raw material की, तो हमें cheap sources of vendors निकालने चाहिए कि कल को अगर currency उनकी appreciate भी हो जाए, it does not harm my competitiveness in my country or in my market. So diversification is the key to manage the economic exposure, along with market diversification, financial diversification. कि भाई अगर मैं कहीं invest कर रही हूँ, तो I also balance it by borrowing from in that currency. कि भाई अगर मैं वहां पैसा लगा रही हूँ, तो और मेरा cash inflow है वहां से receivables बनते हैं, so I should try to also be deploying that money, या मेरे payables मुझे ऐसे create करने चाहिए. I should match my receivables with my payables so that the fluctuation on the currency का net effect उतना ना हो मेरी company पे. Right? So low cost production side, flexible sourcing policy, ki if there is any if I'm unable to source from a particular country, कोई tariff barriers, for example अभी China US major tariff escalation हुआ. US ने तो बहुत सारे countries में tariff impose किए, increase किए. Some of them may have been rolled back, but it would have changed a lot of things for a lot of companies. जैसे इंडिया में IT companies, Wipro, they have their receivables in dollars, right? They are selling to US clients. And if their services become expensive to US clients, it hampers their cash flows. It hampers the cash flows of TCS, Wipro, and all those companies that have their market or client sitting in US. Right? Or so in that case, how do you manage such exposure? You diversify your markets, you diversify your products, you try to tap new markets in case you feel that a particular currency is my dependence on a particular currency is a lot. So उस case में we look for new markets. So economic exposure is more of a dynamic concept than being a static concept. We have to keep analyze and assessing the currency market situation. ऐसा नहीं है कि बहुत major changes, छोटे छोटे changes बहुत impact करेंगे. But yes, changes like now
now these times the foreign exchange market is in huge chaos. There have been huge changes in context of the tariffs, non-tariff barriers, geopolitical issues. So in looking that, taking that into consideration, जैसे अभी एप्पल का कि भाई अभी इंडिया से जितना भी डील सोर्स करना है कर लो, आईफोन सोर्स करने हैं कर लो, बिकॉज आगे टैरिफ चेंज रेट बढ़ने वाले हैं. सो सच आर सर्टेन decisions that a management has to keep taking to contain the impact of foreign exchange volatilities on their books, on their cash flow. That's what management of economic exposure is. Right. So reliance on a particular currency should be reduced by diversifying your production locations, your market locations. Financial hedging can also be done. Financial hedging would mean that I undergo currency swaps. एक रोल ऐसे if I know that एक करेंसी में मेरे पास हर साल रिसीवेबल्स होते हैं, नेट रिसीवेबल्स होते हैं, या डिविडेंड रिसीव करती हूँ मैं अपनी सब्सिडरी से, सो आई शुड हैव अ करेंसी स्वैप पोजीशन फॉर दैट करेंसी इन एडवांस. फ्यूचर जितने भी कुछ आगे के कुछ सालों के लिए मेरे पास पहले से ही स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए where I am able to fix the rate at which I will be swapping their currency for my currency, right? So there are various tactics that can be followed. जैसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, इकोनॉमिक एक्सपोजर is more of a macro impact on the company कि उनके कैश फ्लोज किस किस तरीके से हिंडर हो सकते हैं और उसको कैसे मैचिंग. कैश फ्लो मैचिंग इज वन वे, entering into currency swap is another way. No heavy reliance on one particular currency is yet another important factor that plays out. ठीक है? So that's how we manage the economic exposure. With this, we are through with unit 3. We've discussed transaction exposure, translation exposure, and economic exposure. If there's anything you want to ask, you can ask. Otherwise, we move to next unit, which is the last unit. Ma'am, Yes. there's a topic, international accounting standard. Do we need to prepare it just for that as well? No, I mean just go through FASB 52 जो हमने क्लास में भी किया था, जो कि यूजुअली जो मैंने देखा है कि थियरी में अगर आना होता है तो वही आता है. Sorry. Okay. Foreign currency translation, right? For FASB 52. FASB 52 is in your translation exposure. Yes. है ना? तो ये हमने तब भी डिस्कस किया था, बस उतना ही, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है. Okay. चलो आगे चले. Yes. Oh, how will we complete it in 10 minutes? I don't know. चलो unit 4. Unit 4, we discussed 3 things. We discussed the capital budgeting for MNCs. We discussed the cash management in MNCs. And we also discussed international investment. What were you saying, Sanvi? International portfolio management. Portfolio management, मतलब वही portfolio return, portfolio risk निकालना आना चाहिए उतना ही. So capital budgeting हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए या एक एमएनसी और एमएनसी के लिए कैसे ये डिफरेंट हो सकता है, या how the capital budgeting decisions differ when we look at it from a parent company perspective and when we look at it from a subsidiary perspective. Correct? तो भाई जब हमें हमेशा एक ही perspective देखना है, which is parent company perspective, which means
कि आउटफ्लो देखेंगे तो भी इसकी करेंसी में देखेंगे, जब इनफ्लो देखेंगे सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने से जो इनफ्लोज हो रहे हैं वो उसको भी हमें पेरेंट कंपनी के करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारा कैश इनफ्लो है, ईयरली कैश इनफ्लो है सब्सिडरी के, उसको हम पहले देखते हैं कि उसमें से रेमिट कितना हो रहा है, इज 100% बीइंग रेमिटेड और अ प्रोपोर्शन ऑफ इट इज बीइंग रेमिटेड। तो वॉट एवर इज बीइंग रेमिटेड उसका उस पे रेमिटेंस टैक्स कितना लग रहा है ये देखते हैं। फिर वॉट एवर इज लेफ्ट इज being repatriated to the parent company, which we convert into parent currency. Right? अगर capital budgeting decision का मतलब क्या है? You assess the cash outflow and inflow in a project. When you're investing, you are making a long-term decision. You look at कि भाई उससे मेरे को receive what will I make out of it, right? The return that I'll make out of it. So there are various methods like NPV method, IRR methods, profitability index to assess capital budgeting decisions, to assess whether I should invest in a long-term asset or not, right? यही करते हैं. Yes. But when it comes to the multinational companies, it is a little different because multinational companies are investing in subsidiaries. But when they receive from subsidiaries, they have to bring exchange rate changes into picture. They have to look at the amount they can get back. तो रेमिटेंस देखते हैं, रेमिटेंस टैक्स देखते हैं, फिर एक्सचेंज रेट देखते हैं कि एक साल बाद ये पैसा आएगा तो एक साल बाद रेट क्या होगा जिस हिसाब से ये पैसा कन्वर्ट होगा. एंड फाइनली they arrive at the CFAT from parent perspective. So tax laws, subsidiary face कॉर्पोरेट टैक्स रेट, होस्ट कंट्री में जो टैक्स रेट चल रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, वो लगा के ही सीफैट निकलेगा. बट उस सीफैट निकालने के बाद भी एक रेमिटेंस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा जो हमें अकाउंट करना पड़ेगा. राइट? फॉरेन एक्सचेंज रेट को अकाउंट करना पड़ेगा कि भाई एक साल बाद का इनफ्लो है तो एक साल बाद का एक्सपेक्टेड फॉरेन एक्सचेंज रेट लेंगे. We will also have to account on the restriction on capital account mobility, as in कि whatever the subsidiary is making उसका कितना परसेंट कंपनी रिपैट्रिएट कर रही है. अगर 70% ही रिपैट्रिएट कर रही है तो वो 30% री इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो उस साल के सीफैट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. करेक्ट? तो वो उसे हम बोलेंगे ब्लॉक्ड फंड्स. इट गेट्स री इन्वेस्टेड इनटू द सब्सिडरी इटसेल्फ, और वो जब अनब्लॉक होगा वो तभी, और जिस ईयर में वो अनब्लॉक होगा तभी वो सीफैट में कंसिडर होगा, उसी ईयर के सीफैट में कंसिडर होगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में कंसिडर होगा. राइट? सो ये प्रोसेस हमने करा था. डू वी रिमेम्बर दिस? Yes, ma'am. ठीक है. और थियोरेटिकली ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें एवरी पार्ट ऑफ every source of the difference between parent and subsidiary cash flows is accounted for in this equation. We have whatever inflow outflow the parent company has made, वो हम नेगेटिव में लेंगे. इट्स एन आउटफ्लो. पेरेंट ने अगर सब्सिडरी को डेट दिया है तो वो भी आउटफ्लो है. उसके बाद जो भी डिविडेंड वापस आ रहा है वो इनफ्लो है. अगर मैनेजमेंट फी, रॉयल्टी कोई सब्सिडरी पेरेंट को पे कर रहा है तो वो भी इनफ्लो है. कैनिबलाइजेशन कॉस्ट है तो वो एक तरीके से आउटफ्लो है, लॉस है. कैनिबलाइजेशन कॉस्ट क्या होता है? रेवेन्यू फॉरगॉन बिकॉज यू इन्वेस्टेड इनटू द सब्सिडरी. राइट? और सब्सिडरी कोई डेट रीपे कर रहा है वो इनफ्लो है. सब्सिडरी अगर पेरेंट को डेट रीपे कर रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू हो या इंटरेस्ट हो. वैल्यू ऑफ ब्लॉक्ड कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी अनब्लॉक्ड. सो व्हेनेवर द मनी दैट इज ब्लॉक्ड और इज नॉट, जो भी पार्ट ऑफ cash flows made by the subsidiary were not remitted and were reinvested,
वो जब भी अनब्लॉक होंगे उसकी भी वैल्यू हम लगाते हैं और लास्ट में टर्मिनल वैल्यू मतलब सैल्वेज वैल्यू, राइट। Yes, ma'am. एनपीवी मेथड, ये सेम एग्जांपल हम कर चुके हैं। हमें पहले सी फैट निकालना आना चाहिए सब्सिडरी के पर्सपेक्टिव से। सी फैट क्या होता है? जो भी नेट इनकम होती है सब्सिडरी की, उस नेट इनकम में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं, वो बन जाता है सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। और सी फैट फ्रॉम सब्सिडरी पर्सपेक्टिव जब निकल गया तो हमें पेरेंट पर्सपेक्टिव तक लाना है। कैसे लाएंगे? कितना रेमिट हो रहा है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है, रेमिट टैक्स लगने के बाद क्या वैल्यू बनी इन फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज रेट क्या होगा, और वो एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई करके पेरेंट करेंसी में आपके पास कैश फ्लो आ जाएंगे। Then we can simply calculate NPV. We have cash outflow, we have cash inflow, present value of cash outflow minus present value of cash, sorry, present value of cash inflow minus present value of cash outflow will give us net present value, right? So you can expect a numerical here. Shall I move to APV method now? Yes, ma'am. एक बार पहले जो हमने कर लिया है वो रिवाइज कर लेते हैं, देन वी कैन स्पेंड सम टाइम ऑन एपीवी। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क निकालना आता है, आता है मैम। right? We can use these formulas. Portfolio return तो weighted average return हो गया, portfolio risk में we have covariances, weights and standard deviations in the respective countries. बस यहाँ पे security की जगह country हो जाता है। कैश मैनेजमेंट भी डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। As a cash manager to an MNC, the manager needs to take care that every subsidiary has enough cash, but also has to take care that no subsidiary has inadequate amount of cash, a lot of cash, optimal cash होना चाहिए सबके पास। It should try कि हम जो collection है वो central रखें, और जो डिसबर्समेंट है वो सेंट्रल रखे, और कलेक्शन हम जितना अपने क्लाइंट के पास पहुंच सके, जहां भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनसे भी हमारी कलेक्शन होती है, so we need to expedite the collection, disbursement to keep a control on the amount that are paid outside the company must be, to have a control on that, we can centralize that facility. One another way of managing cash is to consistently netting the payment transactions happening between subsidiaries. ये भी हमने किया था. So if there are 4 subsidiaries and they have cash, they have financial transactions among each other, so those transactions must be netted as much possible so that the number of transactions can be minimized, the amount of transaction tax, the amount of conversion cost the company will have to bear will be less. So multilateral netting method हमने किया था, right? Multilateral, हाँ जी। So इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पेमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं कि हाँ, we can make it any which ways. This is just a prototype, एक example है. Paying subsidiaries, receiving subsidiaries, and we make a payment matrix that how much this country, this subsidiary owes to this subsidiary and so on so forth. और उसके बाद हम नेटिंग मैट्रिक्स बना देते हैं कि भाई इस कंट्री का, इस सब्सिडरी का टोटल रिसीट कितना है, टोटल पेमेंट कितना है, नेट पेमेंट कितना है, नेट रिसीट कितना है, एंड that table will highlight कि हमें कितना पेमेंट, which subsidiary owes and which subsidiary is to receive money, किसके पास पैसा आएगा, किसके पास से पैसा जाएगा, राइट? ये मल्टीलेटरल नेटिंग भी करी थी हमने। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। You can take a screenshot of this question. I think ये हमने तब नहीं किया था. You can try this out yourself. So we can expect a numerical here also. How we conduct multilateral netting across subsidiaries.
Any doubt with multilateral netting? Do you want me to explain properly or you guys remember? आता है मैम। आता था, आ गया था, बस हमें तो ये टेबल्स बनाने हैं, बहुत इजी से टेबल्स हैं, आ जाता है आंसर इसका। APV method of multinational capital budgeting. So, adjusted present value method is a modification over NPV. It's not just meant for multinational companies, it's meant for even the domestic companies, APV method. So, APV method is a value additive approach. जैसे जैसे ये हमने एक मॉडल देखा अभी कि भाई हमने देखा कि भाई कहाँ से जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे किस किस सोर्स से वैल्यू मिल रही है और उन सबको मैं ऐड करती गई। तो ऐसा ही अप्रोच है ये वैल्यू एडिटिव अप्रोच वेयर आई लुक एट द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आई एम मेकिंग। अगर मेरे को इन डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स सेविंग हो रही है तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेवेन्यू फॉर मी। अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से टैक्स सेविंग हो रही है तो वो भी मेरे लिए एक इनकम है। सो वी लुक एट द वेरियस सोर्सेस ऑफ कैश इनफ्लो एंड एवरी सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो जिससे मेरे को वैल्यू एडिशन हो रहा है उस सारे कैश इनफ्लो का उन सारे कैश इनफ्लो को हम अलग अलग डिस्काउंटिंग करते हैं। Because some of those cash inflows might be risky cash inflows, while other cash inflows may not be risky, may be risk free. भाई depreciation मैंने account करना ही है और depreciation की वजह से tax saving मेरे को होनी ही है, तो उस case में there is no uncertainty around it. And if it's a certain cash flow, then the discounting जब हमें इसकी करनी चाहिए तो वो risk free rate of return यूज करके करनी चाहिए या risk premium वाले रिटर्न डिस्काउंट रेट से करनी चाहिए। रिस्क फ्री रेट से करनी excuse me, चाहिए। यस ma'am, someone is waiting in the room. Please let it in. Okay, so let me explain how we derive this model. Okay, so APV method बोलता है कि now let's decompose the various sources of cash inflow and consider that your company is an all equity financed company. मतलब डेट है ही नहीं, अभी ये मान लो that your company is an all equity financed company, which means जब मैं CFAT निकालती हूँ, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालती हूँ, तो पहले तो नेट इनकम निकालती हूँ। ये जो मैंने लिखा है ये नेट इनकम का लिखा है, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस
ये सब माइनस करा और इस पे टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स आ गया ये नेट इनकम। रेवेन्यू में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस सब माइनस कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। सो दिस इज योर नेट इनकम। इज दैट करेक्ट? Yes, ma'am. क्योंकि सी फैट निकालना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है, तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दूंगी। ये तो नेट इनकम है, नेट इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ता है सी फैट पे आने के लिए। यस। Yes. और क्योंकि मैं ये भी बोल रही हूँ कि आई एम प्रिज्यूमिंग माई कंपनी इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, विच मीन्स कि ये जो मेरा इंटरेस्ट वाला अफेक्ट है इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं अलग से आई विल सेपरेटली एड द वैल्यू ऑफ डेट, I will add the value of the debt separately. Hence, if it is an all equity financed company, then I'll have to add back the after tax cost of interest. जो भी मैंने यहाँ पे माइनस किया था वो मैंने वापस ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बन क्या गया? R माइनस OCF, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस OE मान सकते हैं इसको अगर ऐसे कंफ्यूजन लग रही है तो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस if I open this bracket, तो हमारे पास ये आ जाएगा R माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 1 माइनस टी माइनस डी प्लस डी टी। सो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये रह जाएगा सी फैट में टी, R माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 1 माइनस टी। इसको नहीं छेड़ा मैंने, इसको ओपन किया, माइनस डी इंटू 1 माइनस टी प्लस डी। इसको सॉल्व करेंगे तो डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स आ जाएगा, विच इज आल्सो नोन एज द टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, द नेट इफेक्ट ऑफ हैविंग डेप्रिसिएशन ऑन द बुक्स। Tax saving on depreciation, because this is the only source of value it is giving. अदरवाइज तो सारा इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इतना ही इफेक्ट पड़ा कि जो मेरा डेप्रिसिएशन मैंने लगाया उस पर मुझे टैक्स सेविंग मिली है। सो डी इंटू टी इज द टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। मैं इसको ओपन करती हूँ तो यही आएगा, माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी टी। सो माइनस डी प्लस डी टी प्लस डी विल गिव मी प्लस डी टी। माइनस डी प्लस डी कट गया, राइट? और ये तो सारा ही कैंसल आउट हो गया, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये मेरी ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी अभी के लिए। ठीक है, और अगर इक्विटी फाइनेंस कंपनी नहीं है तो इसमें जो भी डेट लेने की वजह से मेरे को वैल्यू एडिशन हो रही है वो मैं ऐड कर दूंगी। सो सी फैट बन गया ये। यहां तक समझ आया? यस नो कुछ बोलना पड़ेगा। यस मैम। ma'am. नहीं आया तो पूछ सकते हो। मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? So we are trying to derive the APV model. APV says that we should look at the sources of cash inflow separately and discount them back separately. ठीक है, तो हम सी फैट को खोल रहे हैं। जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर साल का सी फैट निकालते थे, उसको डिस्काउंट बैक कर देते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में कुछ ऐसे इनफ्लोज हैं जो सर्टेन होते हैं, कुछ ऐसे इनफ्लोज हैं जो अनसर्टेन होते हैं। तो जो कैश इनफ्लो सर्टेन होते हैं उनको जब हम डिस्काउंट बैक करते हैं तो हमें सिर्फ रिस्क फ्री रेट यूज करना चाहिए, और जो इनफ्लोज अनसर्टेन होते हैं उनको जब डिस्काउंट बैक करते हैं तो we should use the rate that subsumes the risk premium for those cash flows. Discount rate क्या है? Discount rate should
रिफ्लेक्ट द रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लो। भाई ऐसे ही थोड़ी कि कोई भी रेट ले लिया। अगर आपको पता है कि अगले साल आपको 1 लाख कैश इनफ्लो आने की सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी है, तो आप जब उसे उसकी आज की वैल्यू निकालोगे तो यू विल यूज अ हायर डिस्काउंट रेट वैल्यू, you will discount it at a higher rate because it is more risky. It may happen, it may not happen, right? So that's what APV method says, adjusted present value method says, that when you find the value of any investment, we look at the sources of income, sources of cash flow, and whether that source is contains any risk or not. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, सी फैट को एक्सपैंड कर दिया। रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू 1 माइनस टी। ऐसे ही तो निकलता है नेट इनकम। जो आप सेल करते हो उस सेल में से सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो, फिर आप ईबीआईटी पे आते हो, ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर आप ईबीटी पे आते हो, ईबीटी में टैक्स माइनस करते हो, फिर आप ईएटी में आते हो। यही करते हो। यस मैम। सो इसको बस मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस से अभी अलग कर दिया है। सो रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, भाई जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, सब यहाँ आ गया। तो सेल में से वो खर्चा माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया, उस पर टैक्स लगा दिया, तो ये बना नेट इनकम। नेट इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देती हूँ तो बनता है सी फैट। और अगर मैं मान लूं कि मेरी कंपनी में सिर्फ इक्विटी ही लगा है, डेट है ही नहीं, तो इसका इम्पैक्ट भी मेरे को खत्म करना पड़ेगा, तो ये मैंने ऐड बैक कर दिया। इसको जब सिंप्लीफाई किया, व्हाट एम आई लेफ्ट विद इज CFAT of an all equity financed company is equal to revenue minus operating expense 1 minus T plus DT। ये रह गया मेरे पास कि भाई रेवेन्यू में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करा, 1 माइनस टी, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम आ गया ये मेरे पास, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम आ गया, प्लस टी इंटू टी विच इज डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट विच इज टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। सो एपीवी मेथड कहता है कि सी फैट के ये दो बन गए आपके, वन दैट इज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, सेकेंड दैट इज द टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिसिएशन। एपीवी कहते हैं इनको हम अलग अलग डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि जो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन है दैट इज अ सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम, वी डिस्काउंटेड बैक यूजिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब आप यहां देखो, ये जो लिखा है ये है हमारा पहला, दिस आर माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 1 माइनस टी, ये चीज है पहली लाइन आइटम। तो जब इसको डिस्काउंट बैक करोगे, क्योंकि ये ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, यूज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे केयू इसलिए लिखा है, केयू इज कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। अनलीवर्ड कंपनी वो होती है जिसने कोई डेट नहीं लिया होता, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो discounted back using cost of equity plus tax into depreciation, which is the tax saving on depreciation, discounted back using risk-free rate of return. This I here reflects risk-free rate of return. नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हो एक तो आ गया सैल्वेज वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, जो भी हम इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करेंगे और उनके एसेट्स को सेल ऑफ करेंगे, we discount that back using cost of equity again. This that you are seeing here is the impact of having debt in the company. अभी तो हम presume कर रहे थे कि it's an all equity financed company, but what if the company has debt लिया हुआ है, तो उसका
नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट होता है बेनिफिट फ्रॉम डेट, बेनिफिट फ्रॉम हैविंग डेट माइनस कॉस्ट ऑफ हैविंग डेट। कॉस्ट ऑफ हैविंग डेट तो भाई हमारा यही हुआ कि इट इंक्रीजेस द बैंक्रप्सी रिस्क, इट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बेनिफिट होता है द टैक्स सेविंग ऑन द इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्योंकि आपने डेट लिया तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस पे यू सेव टैक्सेस, सो बेनिफिट इज द टैक्स saving on the interest expense, which is another source of income of having debt. So this is yet another source of income for CFAT कि भाई अगर डेट लिया हुआ है तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग हो रही है ना, that also needs to get added. और जब हम उसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो दैट इज अगेन डिस्काउंटेड बैक यूजिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज दिस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज सर्टेन। अगर आपने डेट लिया है तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करोगे ही करोगे बुक्स में, और उसकी वजह से आपको टैक्स सेविंग होगी ही होगी। तो दैट इज व्हाट, अगेन हमें ये सिर्फ थ्योरेटिकली समझना है कि ये हमारा मॉडल है एपीवी का, और ये वैल्यू एडिटिव अप्रोच है। मतलब इसमें हम सोर्स ऑफ वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट में वो सब अलग अलग लाते हैं। अब ये तो हुआ बेसिक मॉडल, इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं कि भाई कल को मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, इस कंट्री में इन्वेस्ट किया है, तो मेरी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ गई। उस बढ़ी हुई बोरोइंग कैपेसिटी से मैं ज्यादा टैक्स सेविंग कर पा रही हूँ, तो दैट गेट्स एडेड टू इट। या फिर मुझे लग रहा है अगर मैंने इस कंट्री में इन्वेस्ट किया है तो मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू प्रॉफिट बढ़ा पा रही हूँ अपना, तो दैट ऑल्सो गेट्स एडेड टू इट। सो अब जैसे जैसे सोर्सेज ऑफ वैल्यू एडिशन टू द प्रोजेक्ट ऐड होते जाएंगे, वो आते जाएंगे, वो इसमें ऐड होते जाएंगे, और डिपेंडिंग कि वो कितना सर्टेन है या अनसर्टेन है, we'll use the discount rate to discount them back to find the present value. So it is a value additive approach to capital budgeting. जैसे एनपीवी में एक सीफैट निकाला और उसको डिस्काउंट बैक कर दिया। किससे डिस्काउंट बैक कर दिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट दोनों लेते हैं। यहां पे अलग हो रहा है, each cash flow that is a source of value is considered individually, and each cash flow is discounted at a rate that is appropriate to the riskiness of the cash flow. So this is your APV model. Although iska I've never seen any numerical coming for this model, but I will still share a solved numerical just for you to have a glance, कि आपको पता लग जाए कि ये मॉडल थोड़ा और theoretically आपको समझ आ जाएगा अगर आप एक बार वो न्यूमेरिकल देख लोगे। ठीक है? मैम, यस। मैम एक यूनिट में फिशर इफेक्ट का भी बताया गया है। तो आपको फिशर इफेक्ट नहीं आता सानवी? फिशर इफेक्ट तो हम लोग उसका थ्योरी तो है, बट प्रैक्टिकल भी एप्लीकेशंस करनी है। नहीं, नो। फिशर इफेक्ट तो वी ऑल नो दैट 1 प्लस nominal rate is equal to 1 plus real rate into 1 plus inflation. यही होता है ना। इन्होंने इस फिशर इफेक्ट से IFE डिराइव किया है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। सो F minus S upon S is equal to, आपने अभी पढ़ा था इंटरेस्ट रेट पैरिटी में, I K minus I J अपॉन 1 प्लस आई के, कुछ ऐसा पड़ा था। तो अभी तक ये इंटरेस्ट रेट जो हम मान रहे थे ना, वीवर, एक सेकेंड, हमारा ये तो था इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी था। पाई के
माइनस पाई जे अपॉन 1 प्लस पाई के, कुछ ऐसा ही था। ई है ना, एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट। Yes, ma'am. तो एफ को अगर मैं ये मान लूं दैट दिस इज फॉरवर्ड रेट इज एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट को अगर मैं ये मान लूं कि फॉरवर्ड रेट इज एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट, और इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या ये ई ही नहीं बन गया? एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इज द चेंज इन एक्सचेंज रेट। भाई अभी 100 रुपए का है डॉलर, अगर मैं बोलूं कल को 120 का हो जाएगा, तो 120 माइनस 100 अपॉन 100, कितना परसेंट का चेंज आया? 20% का चेंज आया। Yes, तो ये एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट बता रहा है। yes, तो अब बस क्या करना है हमें, इसको हटा के, मतलब एफ माइनस एस अपॉन एस की जगह मैं ई भी लिख सकती हूँ। और अगर, और मुझे पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी की ये इक्वेशन है, आईआरपी की ये इक्वेशन है, तो इसको अगर मैं ई कर दूंगी इज इक्वल टू ई, तो दिस ऑल्सो गेट्स इक्वल टू दिस। ये इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट बोलता है कि भाई नॉमिनल चेंज इन इंटरेस्ट रेट लेवल्स या चेंज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लेवल्स is equal to change in inflation levels। ये बस इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी को के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर रहा है। okay, ma'am. ठीक है, इज देयर एनीथिंग एल्स? बाकी रीड कर लेना, थ्योरेटिकली भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकली तो नहीं करना। एंड आई एम नॉट टू श्योर कि आपके सिलेबस में ये है भी मेंशन कि नहीं। इज दैट फाइन? इज देयर एनीथिंग एल्स? मेंशन तो है सिलेबस में। ठीक है, तो थ्योरी थ्योरी करना है, न्यूमेरिकली तो आई डोंट थिंक बुक्स में भी है। Is there anything else you want to ask? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, if there are any questions you practice and you want any help on that, you can reach out over my mail ID. You can uh, share your doubts. I will be responding then there. ठीक है. With this, I wind up this class. We've covered almost all the topics. कुछ बहुत डेप्थ में हो गए, कुछ हमने ऊपर ऊपर से किया, but that's how it is. How our revision class is. We wherever you think कि theory है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं हुआ है या whatever, just go ahead and read it, right? We are students. इतना हैंड होल्डिंग की नीड होनी नहीं चाहिए, स्पेशली when they are simple theory topics. I expect you to read over and then come and ask, right? Ask your doubts. Instead of me taking up every topic afresh with you, better you also SOL के स्टूडेंट्स हो यार, खुद भी थोड़ा बहुत रीड करो। जब नहीं समझ आ रहा है, जहां नहीं समझ आ रहा है, टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। आई एम ऑलवेज हियर एट SOL if you want to come around or if you want to mail, you can. ठीक है? Otherwise, the syllabus is complete from my end. I will be stopping here. Thank you for attending. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.